Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, we are waiting for the speaker.
Hello, good afternoon, sir. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Uh, Rehan, sir, shall we start? Hello. 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 Yes, sir, shall we start? The screen is proper, Kamble madam. Yes, yes, sir. Yes, sir. This is Monali Kalekar. Shall we start, sir? Who is coordinating for the program so that I can, Yes, sir. This is ma'am, Monali Kalekar. you're not audible. Audible. Sir, this is Monali Kalekar. Okay. Who is coordinating for the program? This program, Me, ma'am. sir. Me, sir. Monali. Okay. Okay, madam. My screen is proper. You wish me to do up, down, right, left, something like that. No, Face is sir, you are visible visible. or slide? Yes, you are visible, sir. Okay. Yes. So shall we wait for 3-4 minutes and then start, madam? Yes, no problem, sir. Yeah, fine. Yes, I'm good. Hi, students here. Yeah. Currently, this our I don't know. Kamble madam, shall we start? Yes, sir. Okay. Sir, I'll So start with your introduction and then I'll hand over the session to you. sure. Yes, once again, good afternoon, everyone. This is Monali Kalekar, HOD of Civil Department from Thakur Polytechnic. I, on behalf of Thakur Polytechnic family, welcome you all on day 3 of FDP on human values and its impact on youth. So today's topic is ethics and beyond. So, ethics is the study of moral obligation involving the distinction between what is right and what is wrong. And this is influenced by a person's values and beliefs. We strive to create and inculcate an ethical culture and practice amongst the youth. So, to enlighten us,
more on this topic, we have along with us today's guest speaker, Dr. Rehan Ansari. Welcome, sir, for this session. So, Sure. let me introduce you all our guest speaker, Dr. Rehan Ansari. He is a leader, process centric professional with strong human sensibilities. He is a highly educated and well grounded person with rich working exposure across the sectors. His domain expertise is in management, strategy, mentorship, and entrepreneurship. His educational qualifications are he is MBA MMS Marketing from SIES College of Management Studies, BA and MA from St. Xavier's College, PGD in Customer Relationship Management from ICFAI University Hyderabad, MPhil in International Business, and he is PhD in Management Studies from Sydenham Institute of Management, University of Mumbai. His professional qualifications are he is more than 20 plus years of experience in corporate world. He has worked with top companies like Reliance Infrastructure Limited, Cushman and Wakefield, American MNC, Orbit Corporation, Space Hub, BC Group, and HDFC Bank. Entrepreneurship, invent, build, manage, and exit. Few brands, business across many multiple industries like Space Hub in realty, China Bay Resort in hospitality. These are the few names. Currently, he is working upon a unique product in real estate sector that is soon to be launched. So his current profile is Zogrid, that is hybrid real estate development model. His focus is on concept to completion of the project. Also, he has academic exposure to more than 15 years as a visiting faculty for MBA colleges like Sydenham College, Jamnalal Bajaj College, IIM Indore College. He is also a course writer for MBA program for the colleges, NMIMS, HSNC University for the subjects like marketing strategy, entrepreneurship, real estate products and services. His star credits are he is appointed as jury member by Economic Times for ET Realty Awards 2022. He is certified Six Sigma Black Belt Business and certified project management professional. He is certified MRICS Chartered, that is member of the Royal Institute of Chartered Surveyors, London, UK. He has won Mr. Inspiration Award 2022 by Rabia's Mumbai. He has awarded Alumni Entrepreneurship Award 2022 by CCOMS and SBS Mumbai. So, sir, this is the short introduction of you. And with this introduction, I hand over this session to you all. And I am sure that we all are going to enjoy this session and get the benefit of this session. Thank you very much, ma'am, for a wonderful introduction for today's topic. You just have to help me out because I have to get the presentation onto it. So, shall I go for the sharing, screen sharing, ma'am? Yes, sir. Uh, Yes, sir. You can. it is okay. So I'll just capture the screen sharing. Where shall I go, ma'am, for screen sharing? This is in Sir, one arrow is there, up arrow, present now arrow is there. Acha, present now. Okay. Yes, that you can share. Chrome, it's in Windows. Okay. Under Windows. But Windows further I have to get into it. So I have to get the thing on the desktop first. Yes, sir, whatever you want to present, you can open that window. I So you are on PC, computer, right? Yeah, I'm on a laptop, madam. Okay, and laptop only you are doing present now option, clicking on present now, right?
The present now. So this is coming up. Chrome tab, Windows, and entire screen. So in Windows, Chrome tab you can select, sir. okay, Chrome tab I'm Is it from selecting. the tab? It is from the Chrome tab, sir. No, it Your is on the presentation. desktop. So you can say entire window. You can click on entire window. Okay, okay, for the entire window, it's not getting selected. I'll retry again. Stop it and you can again present. Ah, it's window. I don't know if I can do it in this manner. Yes, sir. Your screen is visible now. Visible, na? Okay, now it's visible, ma'am. Yes, but it is full It's white, visible, sir. ma'am. Content is not visible, sir. Full white. Yes. What shall we do now? Option. Okay, okay, could be possible. Let me try now, ma'am. It's visible, ma'am, now? Yes, It's sir. Your visible? screen. Yes, your screen is visible, sir. So you can open that PPT, Okay, sir. it's coming. Yes. I've already opened the PPT. So that first slide is highlighted matlab, at your end. No, sir. You have to click it. Ethics and beyond PPT, I can see from here. Least I am able to see. Your document and least I am able to see. Okay, okay. I'll get it on the desktop and sorry, just give it a minute. Sir, so if you want to present the PPT now, while presentation, you have to Right. select a window. So to present Sorry? a window for presentation, you have to select a window. Second option, window you I'm have to selecting a select window, but and I'm then selecting the open, window option, yes, and open but the it's PPT, not sir. showing in my window. It's not showing in my window, ma'am. So can you stop it and again reshare? Okay, I will move out and do it. Yes, sir. PPT is open in the window, na, sir? Take minute. I mean, I'm moving out and doing it again, ma'am. Just give me. Okay, sir. But in my this thing window, that desktop is not showing. I don't know why. Okay, I believe. Can you see the presentation now, Yes, ma'am? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now it is visible. Presentation visible, no? Yes, sir. Okay, First so slide I is believe I will visible. run the presentation. Yes, fine, Okay, sir. Yes. but I cannot see the participants. Only the slide is visible to me. Uh, I cannot pink see the screen. participants. Sir, otherwise you can send us the PPT. We will play it from here. Oh, but okay, okay. That way, I'll WhatsApp you. Yes, sir. Send the PPT to Harnish, sir. You can send the PPT to Harnish, sir. Now it is He Okay, visible, will. na? it's visible. I Now the can run PPT it, is huh, ma'am. visible. Yes, now it is You can visible. do it from here, but you won't be able to see participants, no? So just give me 1 minute. I will just send it. Just give me Yes. one. Just allow me some 2 minutes time. Yes. Please bear with me.
I'd already messaged him. Yes, sir. We will check. Yes, sir. Okay. It's up. So, who Yes, is sir. Is handling? it? Kalikar madam is handling. Yes. Yes, sir. Kalikar madam is Yes. handling. Okay. Okay. So, ma'am, what we will do is that whenever we have to move for next, then I will say Yes, next. You sir. can jump on the next slide. So, can you make it the full screen? I mean, not the side part. Yes. Um, oh, yeah. Yes, sir. Just a second. So, Just a, yeah, yeah. The first slide. this one, So, sir. by the Right? time they will do, yeah, sure. Yes, sir. Is it visible? I can't see the PPT, ma'am. Just a second. Yeah, this is perfect, I believe. Yeah, it's perfect. Madam, it's perfect. We are on the first slide. Yeah.
Okay, sir. Shall we start, madam? Shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. I thankful to your institute and also to Kalikar madam for the wonderful introduction about myself. And will and I'm extremely sorry uh, for the delay with regards to the uncertainty in the technology. The medium of instruction we will just focus on to English, Hindi, and to some part of Marathi if possible. Uh, uh, and you know, with regards to this online webinar, we look for the higher impact. But online and offline, you know the pros and cons of it. So the good part is that you're not, all of you are not student. You are all academicians. You are lecturer, faculties in your respective at your respective institute. So a very wonderful audience. I got an opportunity to interact with. Uh, here, I believe, I mean, you as the faculties would be also, teaching or facilitating such kind of a subjects to your student. But we face a lot of challenges in terms of communicating it with the student. So here, my focus could be, and it's not going to be a one-sided. It's not a monologue. It's not a one-sided communication. Some faculty or some facilitator or some lecturer is talking to us for some time, and then the lecture gets over. So here, it's going to be more a response, and there could be certain guidelines with regards to the response. One is that it's going to be a lot of interaction we are going to have in this. हम बहुत सारा interaction करेंगे आज के session में. And secondly, I suggest you respected academicians should also respond, but not all at a time. You can raise your pause. I can call out the name, and then you can say. Otherwise, four people will talk together, and we are all human being. I'm also a human being, so difficult for me to interact. So if whosoever is to respond, they can just raise your hand. We are having this section of raising your hand. You can raise your hand. I can call out your name because your names are visible on the system, and you can share with me. So it's going to be more an interaction, and it's going to be a mix of discussion. It is going to be a mix of case studies. It's going to be a mix of videos and also the activity. So, ma'am, Kalekar madam, you would be also having some videos which had shared now. I mean, you are having those videos handy with you. Sir, no, I'll Ma'am, have you to would be look having those forward videos. for this. So Just a what second, I could sir. suggest, I'll have to confirm. by the time I'll start a session, you Yes. with Mr. Harnish now, you can take the videos and keep it handy. So Yes, what sir. we will do Okay, sir. once in the screen now, in the screen, Hmm. there is a screenshot of the video. So whenever the Hmm. screenshot of the video comes in, you can play that video. So that is the only Okay. additional help I require from your side if you can. So you can ask him Yes, to sir. WhatsApp you Okay. or email you the video. There are three videos altogether in today's session. So we will run because it's Okay. a very customized presentation, and I try to put up some effort so that we can deliver it as per the expectations. So the very first, I believe, in today's third session in your initiative of this FDP for a week. So before I'll start up, is it possible the participants could share with me what were human values, and you also get some ideas about human values in these two sessions. So we'll spend some 3-4 minutes onto it before we'll go to the next slide. So it's open for audience. I mean, you can share with me what you mean by values. You can either, most probably you can put your audio on and talk. You can talk in English, you can talk in Hindi, or you can talk in Marathi. Open for any of the three languages. You can also talk in Gujarati. I can understand that. So I could respond in Hindi and English, but you can talk in all the four languages, whichever you prefer. So what do you mean by human values? So I just wish to understand. From your side, this term of human values. Anyone? I mean, we are what? We are 61, 60 Yes, odd. sir. Yes, sir. Yes, Patil sir. Yes, sir. Human values Yes, make us Patil sir. human. Human values are those values If that possible, make us human. sir, I could Hello. suggest. I mean, I Am I don't know the audible, sir? protocol at your end.
You are audible. What I could suggest, I don't know the protocol, but you can also unlock your video. I mean, we can also see you if it's not there in the protocol Okay. apart from your voice. So it could be a more interaction in the online part. If that's not the protocol, we can also see you. Yes, sir. Great. Yes, Patil sir. We don't know. Huh. Actually, we have You can dual also respond in responsibilities. Marathi if Besides possible. this, I Huh. need to look after. Yes, Yes, sir. sir. Am I audible now? Yes, sir. You are audible, and we can also Yes. see you. Yes, sir. Actually, I am in the interior of Thane district, so sometimes there is a problem of connectivity. Human Ha, values ha, are I those mean, values that make us human. make Yes, sir. human. Okay. Very smart. Yeah. For It's example, it's for like a example, UPSC. It's actually, I want to elaborate also. the okay. So, the first thing that we yes, that yes. make us human, that is empathy. Yeah. To think about others also. Means if somebody is in problem or is in need, then we must consider Okay. that if we were in need, what would be Okay. our expectations. So that empathy makes us human, and that is how we are very much sharp, and nature Okay. has gifted us to be empathetic. Yeah. Okay. Okay. We missed out. Sir. Okay. Great. Thank you very much, sir. Anyone else wish to try their hands on before I jump on for next? Anyone else wish to try your hands? किसी और को try करना है? What human values क्या चीज है? One liner will do. Anyone out of 60 of us? Yes. Anyone can try. Leaders, they're all lecturers. Take an initiative. One person, please. You can raise your paws, you can raise your hand, or you can open up and share. What do you mean by human values? So many names are there. I believe they are there. Or shall I ask the concerned people? They can share with me. Seema madam wish to share anything with us? I can see her name. I can see other names also. Meenakshi madam is there. Dr. Ketan Jagtap sir is there. Yes, Sujata madam. You wish to share what is human values? Sujata ji wish to share what is human values? Sir, human values is where the human is having love, respect, and politeness, Okay, governed by okay, all such characteristics. okay, uh, okay, okay. Means he is having Meenakshi ji, from your side, which is one human value मतलब कौन सी human value जो आपको बहुत अच्छी लगती है या जो आप follow um, करते हो? love and harmony ऐसी in कोई human? relationship, हाँ, sorry मैं, family, sorry. family values, Love and harmony, love and harmony. harmony, love and Yeah, harmony. yeah. Okay, great, great. Thank you very much. Yeah, love and harmony. Great, great. Thank you very much, ma'am. Okay, we'll go to the next slide. Uh, Kalekar madam, we'll go to the next slide. So basically what I have done, human values बहुत सारी चीजें हैं, आपको खुद पता है, और इन लास्ट 2 सेशंस में मंडे और ट्यूसडे को भी आपने ह्यूमन वैल्यूज देखा होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज ह्यूमन वैल्यूज. सो अभी हम क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज बात नहीं कर सकते, यू हैव टू फोकस ऑन समथिंग. तो somebody is talking on stress management, somebody is talking on love and harmony, somebody is talking on respect. So I got an opportunity, I thought I will talk on ethics and beyond. So ethics is very important. So let us understand what is ethics. Next, ma'am. Next slide, please. So what we will, yeah, before human values, that Google ka page is there. So as I am also faculty currently, I am for last 15 years I am teaching these MBA students. Currently, I am teaching at 2 places. One at at management institutes in Mumbai. So in my presentation, at the end of the thank you slide, I normally put up this slide and ask the student, okay, we ran through this concept, what is the learning, आपको कीवर्ड क्या है, क्योंकि ये एक स्लाइड से हमको गूगल याद आ जाता है, तो गूगल में हमको चेक करना रहता है, तो हमें कीवर्ड पुट अप करते हैं. तो एंड ऑफ द सेशन
I'm there. Okay. हमको हमको हमारा लर्निंग शेयर करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द सेशन। तो ये स्लाइड एंड में एक बार फिर से आ जाएगी। यस, नेक्स्ट स्लाइड मैडम। Okay, we had spoken about human values. Next, please. Okay, so there are so many human values are there. I mean, fairness is there, dignity is there, feelings is there. Somebody said love and harmony, empathy, responsibility, respect and empathy, sympathy. So if you make the list, there would be so many human values. So what I could suggest, I will pause for 2 minutes. Everybody just write one human value from your side. So I could suggest everyone, whichever human value you like the most, you can just put up in the message one human value which you really like the most. For example, in my case, yeah, I like respect as one of the most important human value in my case. So I suggest everybody. So Mr. Malak has put up honestly. Everybody will put up. Prerna ji has put up respect. Meenakshi ji respect. Sujata ji caring. Patil sir empathy. उन्होंने इस पे बात भी किया है. Integrity. Okay. Some more, please. Everybody just put up one human value from your side. Dr. Gulab sir wish to put up anything? Yeah, Seema ji, attitude of gratitude. Okay, attitude of gratitude. So I should say, thanks for it. Attitude of gratitude. Okay, nature responsibility. Yes, we are also having responsibility. Sonal Kamble madam has put up. We are also having responsibility towards nature. So we just got 7 8 more. Chaman madam, honesty. Some more this thing. We are 60 odd people. We got some 10 or 12 values only. So I believe people are there, and this could be one of the reason to say a hello to all of you. So I suggest at least, yes, Seema ji ka piece. Some more people, please. This is a second thing came from Seema ji. Glory, okay. Meenakshi Kadam madam has put up her human value. Okay. Monali, okay. Morality, okay, wonderful. Okay. Some more, please. Another 1 minute. Priyanka ji, caring. Okay. Priyanka madam has put up caring. Okay. So 3 4 more, and then I will jump for the next slide. Appreciation. Okay, you need to appreciate. Yes, you have to appreciate. Okay. Some more, 1 or 2 more. Okay, affection. 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 Some more, please. Prerna ji, emotions. Sincerity. Just one quick query to Kalekar madam. Ma'am, how many participants are there with us today? Madam, Yes, sir. how many Around participants we are? 60 participants are there, sir. Okay, okay, great. So, I mean, why I was talking to Kalekar madam about 60, we got only 15 odd responses, and there are also repeated response from the same participants. So, I could suggest some 3 4 more. Your choice of human value. I could suggest. You guys can share your choice of human values. So, which you adhere a lot. Okay, just one more to go because we are faculties and we need more. Okay, Shamalji has put up kindness. Samant madam has put up loyalty. Meenakshi Kadam madam has put up discipline. I really respect discipline, and student and youth should have discipline. Everybody should have discipline. Compassion. Oh, wonderful. Shri madam has put up compassion. So great. So thank you very much. So many human values we had come up with. And what we will do is in so many sea of human values, yeah, politeness. Pagari ji has come up with politeness. We will try to work on to ethics. So we will pick up one of the human value which is ethic. Ma'am, next slide, please. So we will just see what exactly is ethics. Okay, so this human values. Before we get into ethics, in this slide we see most of the curriculum in schools and colleges, they develop key qualities like regularity, punctuality, cleanliness, self-control, sense of duty, desire to serve, responsibility, and blah blah and all this thing. But the other paragraph, if you see, if you read and see out here, childhood care and education is not for learning, but is the time and age for imbibing habits, values, discipline, punctuality, timekeeping, helpful in building character and commitment to being good and doing our duty. Learning is second. So this second paragraph, I request any of the
participant, please tell us something about what is so important in the second paragraph of this slide. There is one differentiation. One differentiation is this. What is that differentiation? Anyone? See, this is, as I said, it's more an interaction thing. It's not a one-way communication wherein one faculty will talk to you for another 1 or 2 or 3 hours and that is over. So it's going to be interaction. Otherwise, the faculty as well as the participant, everybody will get bored. So, you need to talk to me and you need to interact with me on this. Anyone can tell me one differentiation? You can see one difference. एक difference आप देख सकते हो second paragraph में. What is the difference? आप खुद एक lecturer हो, faculty हो, student youth से deal करते हो, तो ये क्या एक difference है जो हम clearly देखते हैं students के अंदर? Anybody? You can unmute yourself. आप unmute करके बात कर सकते हैं. For 1 minute, for 2 minutes, you can talk to us. क्या एक difference आप देख सकते हो? Or shall I request any of the participant to share? सुजाता मैडम Today's आपको कुछ शेयर generation is करना? Oh, giving मीनाक्षी. less respect compared to the past generation. Today's generation Less respect compared. is giving less Okay. respect to parents as well as teachers compared to our generation. We used to give a lot of respect to teachers in our age. This is what the Okay, major great. difference I So मैडम find. एक चीज इसमें आपने देखा होगा, एक जगह पे तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, we focus on education, and other is this moral education. So which is better or both need parallelly? I mean, what is your feedback on this? दो चीजें Of हैं, course, एक sir, both एजुकेशन, need एक मॉरल parallel. एजुकेशन, Both are बहुत required. जरूरी है. Even schools also Okay, we have but moral somebody, education, but in college we don't have. So college we have to अच्छा, do the separate counseling for the students. राइट. School there is a subject, और no? लेकिन Moral कैसा, education आपको is a ऐसा basic लगता नहीं मैडम syllabus. कॉलेज, आपको ऐसा लगता नहीं मीनाक्षी मैडम, कॉलेज आते आते बच्चे बहुत लेट हो जाते हैं, उनको ग्रूम करना अभी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ग्रूम देम? Yes, true. Very difficult to groom because they are. हाँ, क्योंकि वो, Uh, यस, yeah, why difficult to groom them, ma'am? Why difficult to groom them? I have also seen that, so I need your reason for it. आपका क्या रीजन है मैडम, क्यों उनको डिफिकल्ट होता है ग्रूम करने में? when the tree is मीनाक्षी small, मैडम. we can bend it easily. Yes, sir. When the tree is small, we can bend it हाँ, easily. If it is growing, it's very difficult to we bend. cannot beat them So ना, in we early cannot stage, beat them yeah. ना. So no, Yes. in early stage itself, you should start the ethics and moral giving to the children. Once they grow, when they come in college, it will be too late, I think. It's too late, nah? It's Hello. too late. Okay, too late. See what best we can do with this episode. It's slightly for the academicians, for the faculties, but we have to find a way out, ma'am. So let's see. Next slide, please. Kalekar madam, next slide, please. Okay. So if you see in human values, uh, 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 you know, uh, there are certain ways. So the topmost is good destiny. Good destiny is good life. So this is a value pyramid what we are having. This is with regards to human value. So what I'm doing, I'm moving in and out of human values, ethics, human values and ethics. Then we'll straight away jump purely to ethics. So it's a mix and match what we are doing. तो इसमें कभी आप देखो तो टॉप पे है गुड डेस्टिनी की अच्छी जिंदगी, सुख शांति वाली जिंदगी, अच्छी लाइफ. और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें सेकंड टॉप मोस्ट पे आता है गुड कैरेक्टर, कि आदमी का कैरेक्टर अच्छा है तो सब कुछ है, कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है. सो गुड कैरेक्टर इज देयर. गुड कैरेक्टर्स का कनेक्शन हार्ट से है, दिल से है. फिर आता है आपका गुड हैबिट्स, और गुड हैबिट्स और गुड एक्शन कम्स फ्रॉम हैंड. You have to use it via hands, you have to help someone, you have to do something. और गुड थॉट्स, तो गुड थॉट्स जो है वो हार्ट में भी नहीं, हाथ में भी नहीं है, वो दिमाग में है. So thoughts comes to your mind, and then everything follows. So there I was just I have also done a lot of courses on subconscious mind. So it helps us to understand about thoughts. So how many thoughts comes in a minute to an individual? Anyone, you can also message me. How many thoughts comes in 1 minute to a human being? In 1 minute, how many thoughts comes to you? ऐसा thoughts आते रहते हैं ना. अभी हम बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, you are listening, I am talking, or you are talking, I am listening.
तो बहुत सारी चीजें आते जाते रहती है. It's coming and going, it's coming and going. So what is the numbers? Any idea? Numbers of thoughts? 10,000 in 1 minute. In 1 minute. So it goes up to 1,000 at times because क्या fraction of a second में भी रहता है. Yes, 47. Mr. Malak, 47. Okay. So 4 to 7. Sorry, not 47. 4 to 7. So a lot of thoughts comes in. तो एक इसका एक flow है. उसको बोलते हैं thoughts. It comes in your thoughts and then you act. It comes in your thoughts first, then you act. So thoughts are very important and you need to have good thoughts at hand. तो उसका connection head से है, action habits का connection हाथ से है, hand से है, good character connection आपके दिल से है, आपके हार्ट से है, और ये सारा का combination आपका एक अच्छा जिंदगी बना देगी. तो we need to see what is coming from where. Next, ma'am. Next. Okay. Yeah, case study. So what we will do, just we'll run a case study and then, ma'am, next slide, please. Next slide, please. Okay, I suggest everybody to read this twice silently at your end. Then we will discuss onto it. So you think you are as one of the in charge in a disaster management team. So जो भी disaster होता है, earthquake होता है, floods होता है, heavy rains होती है, तो वहां पे एक disaster management team जाती है. तो you think yourself as a disaster management team. एंड इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. मैं एक बार पढ़ता हूं, आप एक बार अपने एंड पे पढ़िए, देन वी विल डू अ डिस्कशन. फॉर एग्जांपल, you are in charge of rescue operations in a severely flood hit area. Thousands of people are stranded in deep waters in their homes without food and drinking water for 3-4 days. Because of rough topography and heavy rainfall, the rescue operation is slow. When your staff reach stranded people, they heckle and assault your staff out of anger. One of your team member is severely injured in these fights. Your team member requests you to call off operation as they are scared of facing angry people, and also they are angry about the behavior of the stranded people. At the same time, media is writing negative news about your efforts. So इसी तरह का एक इंसिडेंट हुआ था. बिफोर आई गेट इनटू द केस, जस्ट टू कनेक्ट विथ यू, तो हमारा थोड़ा सा वो ऑब्वियस हो जाए. एक रिसेंटली इसी तरह का एक इंसिडेंट हुआ था. कैन एनीबडी पुट अप इंसिडेंट इन अ मैसेज और ऑडियो? हमारे मुंबई शहर के पास ही, नियर मुंबई सिटी, this incident happened similar to it. Anybody remember where this incident happened recently? Similar kind of incident happened. Anybody remember? It happens just few days back near Mumbai. Similar incident happened where the national disaster management, the state disaster management team landed up and इसको पता है एक इंसिडेंट हुआ है. ये थाने डिस्ट्रिक्ट में हुआ Near था, रूरल Panvel. साइड. Yes, you're right. Patil sir is right. It happens near Panvel. So, why I put up this thing is that we can connect with such incidents. So, अभी ये incident को लेके, what I could suggest, आप एक बार पढ़ लीजिए, then we will discuss on to it. Yeah, next slide, ma'am. There is a question on the slide. Next slide, please. So in such circumstances, as mentioned in the case study, how will you manage the situation? For a person in your position, examine which qualities should be on display during this type of situation. So first we'll take first question at a time, then we'll jump on the second question. So in such circumstances mentioned in the case study, how will you manage the situation? So managing the situation is that give me the opinion of suggesting request of your team member or opinion against the request. Matlab, you will support your team member or you won't support your team member. You help your team member or you won't help your team member with a reason for it. Can anybody please share their opinion? Yes, madam. Mr. Sharad Yankari is here. Sharad ji, you wish to share your opinion on will you support your team member or will you not support your team member?
or it's open for anyone? Any participant can share their opinion. Your team member, yes, one should understand the pain and resentment the people have gone through. Yes. Okay. Let people react. Okay. So some more opinion. Just tell me one thing. I mean, it's otherwise we'll get confused. Just tell me, will you support your team member or you will not support your team member? With yes or no and with a reason. If yes, what is the reason? If no, what is the reason? Will you support your team member or not? Yes, Meenakshi madam. यार ऐसे सिचुएशन Or में तो anyone. झगड़ा बैलेंस करने को आना चाहिए. अभी टीम को सपोर्ट करना इज नॉट द सोल्यूशन. मुझे लगता है कि जो डिवोर्स हो रहा है इसको दोनों साइड से कन्विंस करना पड़ेगा. द पीपल एज वेल एज माय ओन टीम मेंबर. आई कैन टेक वन साइड ना, बिकॉज वो जो झगड़ा हो रहा है उसको शांत करना Okay. सबसे पहली प्रायोरिटी होगी. तो दोनों में से एक का साइड तो नहीं, तो Correct. दोनों Help, को भी help. कन्विंस करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट आई फील. अच्छा. अगर मैं और स्टाफ का आपका साइड लूँ अच्छा. तो लोग फिर ओके. झगड़ेंगे. और आप लोगों का पहले तो स्टाफ नाराज हो जाएगा. तो आई हैव टू सी कि हाउ आई तो कैन ज्यादा इसमें कन्विंस बोथ प्रभावित द कौन है? साइड्स. मैडम, इसमें ज्यादा प्रभावित प्रभावित कौन तो है? लोग हैं. स्टाफ डिस्टर्ब है कि जो इफेक्ट लोग डिस्टर्ब है? ओके. अफेक्टेड, और ऑफ लोग कोर्स डिस्टर्ब. अफेक्टेड ओके, पीपल ग्रेट. आर मोर. सो वी शुड हैव अ सिंपैथी. यस. ओके. 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 स्टाफ आई ओके. ओके. कैन कन्विंस ओके. लेटर आल्सो. आई कैन आफ्टर 2 days आई कैन कन्विंस द स्टाफ. बट ओके. अभी क्या है सिचुएशन में, आई शुड सी हाउ द अफेक्टेड पीपल गेट्स मोर हार्मोनी. ओके. ओके. Okay, good. Patil ji is also supporting. Ram Patil ji का भी ना ही था. He said no. Okay. So we have to be more on the affected. Sarita madam has raised her pause. Sarita ji, what could be your course of action? आपका course of action क्या रहेगा ऐसे सिनारियो में? हाँ सरिता मैडम, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? मतलब आप एज एन ऑफिसर आप क्या करना चाहोगे ऐसे सिनारियो में? हाउ यू विल हैंडल दिस सिचुएशन? Hello. ओके. हेलो. यस सरिता मैडम. यस, माय यस वॉइस इज क्लियर सर. सर यस ऐसे मैडम. सिचुएशन में हम लोगों ने या यू आर एक्चुअली क्लियर. बोलिए. उनको हेल्प ही करनी चाहिए. आवाज क्लियर नहीं ओके. आ रहा है सर मुझे. हेल्प ही करनी चाहिए उनको. वो एक्चुअली उनको हाँ हाँ, प्रॉब्लम आपका आया आवाज तो आ वो रहा है. एंग्री ओके. एंग्री कंडीशन में है वो हाँ वो एक्चुअली. अगर गुस्सा है, वो हाँ एंग्री है, बहुत गुस्सा है. हाँ, वो लोग बहुत बट गुस्सा है. हाँ बहुत बट गुस्सा है वो लोग. हमने वो कितना भी गुस्सा हो जाए हम लोगों ने उनको हेल्प ही करनी चाहिए. हाँ. अच्छा, इसमें हमारा ये ह्यूमन वैल्यूज में से कौन सा क्वालिटी रिफ्लेक्ट होएगा? आप उस बारे में कुछ सोच सकते हैं? ऐसे सिचुएशन में हमारा कौन सा क्वालिटी आना चाहिए? एक क्वालिटी कोई भी बोल सकता है. सरिता मैडम, सर इसमें मीनाक्षी जी, राम पाटिल सर, इथिक्स भी आ रहा एनीबॉडी. है, आई मीन और एनीवन, इमोशंस भी ओपन आ फॉर रहे एनी. यस मैडम. हैं. इथिक्स एंड इमोशंस. हाँ. ओके, काम. लव एंड हार्मनी. आई एम वेरी थैंक हाँ. ओके, आई एम वेरी थैंकफुल टू राम पाटिल सर. वो एम्पैथी जो है ना, इवन प्रदीप दारा जी आल्सो हैज पुट अप एम्पैथी. सो एम्पैथी इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट थिंग, क्योंकि एम्पैथी यहाँ पे बहुत जरूरी है. यू नो, यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन देयर शूज एंड थिंक कि उनकी जगह पे रह के सोचना पड़ेगा कि मेरा घर या मेरा मकान गिर जाता, ध्वस्त हो जाता, खाने पीने को हमको है नहीं, हमारी हालत बुरी है. तो वो एम्पैथी आना हमारे अंदर बहुत जरूरी है. वो एम्पैथी आना हमारे अंदर बहुत जरूरी है. It's you know, that's why we have to here, you know, with this case study and all this thing, here we are focusing on ourselves. Why we are focusing on ourselves? I will just put up a question to all of you, very honest. Uh, or I will pick who wish to volunteer with me in this mini exercise. Then you know what I wish to communicate. We will indirectly communicate. Who wish to, apart from those people who are already there. So excluding Meenakshi madam, excluding Sarita ji, excluding Ram Patil sir, excluding Sujata ji, Seema ji. I want some new names. I wish to interact on this mini exercise. So can anybody raise their hand? I will ask a question. Can anybody raise their hand, excluding these star people? कालेकर मैडम, आप किसी को वॉलंटियर करने बोल सकते हैं? हाँ जस्ट अ सेकंड सर. कालेकर मैडम. हाँ, आप देखिए
ये तो आपके पास 4 5 6 7 तो इतने स्टार्स है, लेकिन हम अभी चाहेंगे कि some more people से we can talk. Because in my screen now I can see 6 7 names only, और फिर आगे ऐसा लिखा हुआ आ रहा है 64 others. अभी वो 64 others कौन है मुझे नहीं पता, मेरी स्क्रीन के सामने सिर्फ 7 नाम दिखते हैं। एक कालेकर मैडम, सुजाता जी, मीनाक्षी जी, डॉक्टर केतन जगताप सर, सीमा मैडम, शरद जी, सरिता मैडम, सो अच्छा सीमा कोले मैडम, या सीमा कोले मैडम, या you can you can say a hello to me so I know that you are there. Seema Kole madam, Seema Kole madam, you can message me a hello so I know that you are there. और यू कैन अनम्यूट, आप अनम्यूट करके मुझे हेलो बोलिए मैडम, तो मुझे पता चलेगा आप हो। सीमा कोले मैडम नहीं है शायद, कालेकर मैडम नहीं है सीमा जी। Yes, sir. any any other volunteer, any other volunteer, hello, any other volunteer we are in? अच्छा सुनील शिंदे सर, yes sir, you can say hello to me. Sunil Shinde sir, you can say hello to me. Sir, I will ask you one question. सुनील शिंदे सर, सर आप अनम्यूट कीजिए। सुनील शिंदे सर, हेलो। शरद यंकर सर, हेलो। शरद यंकर सर इज देयर, कैन यू अनम्यूट, अनम्यूट सर, हेलो। सुनील शिंदे सर, शरद यंकर सर, सी हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। किससे मैं क्वेश्चन पूछ, कालेकर मैडम आप बताइए अभी मुझे। Just a second, huh, sir. हाँ, शमाल, शमल मैम, शमल मैम है, शमल मैडम है। पागल मैम, कोई मुझे Hello. हेलो बोलिए तो मुझे समझ में आएगा आपको। Yes, यस, participant, ये please request मैम योर you गुड all. नेम, Hello. Yes, I हेलो। request participant to please make this session interactive. आप मुझे सवाल नहीं पूछोगे तो हम आगे कैसा पढ़ेंगे, आप बताइए। शमल मैडम, यू कैन से हेलो टू मी। शरद यंकर सर, okay, Trupti madam, okay, great, so thank you very much. I was struggling for last 1 minute to say hello to so many people, तो Trupti Sawant madam has said hello to me. uh, uh, Trupti मैम आप अनम्यूट करके हेलो बोलिए तो मुझे पता चलेगा आप हो। तृप्ति मैडम, तृप्ति सावंत मैडम, हेलो कैन यू हेलो अनम्यूट? हेलो हाँ, ओके, या ओके, तृप्ति मैडम इज, हाँ हेलो। मैं एक सवाल है आपके लिए मैडम। हाँ बोलो। हाँ तृप्ति मैडम, आई कैन हियर यू, मैं सुन सकता हूँ आपको। एक सवाल ये है मैडम, आप जो है $10 दीजिए अभी, दे रहे हो मुझे $10। हाँ हाँ बोलो। हेलो, हाँ आप, एक सवाल है आपसे, हाँ मुझे बोलो। एक $10 चाहिए आपसे, $10, $10 चाहिए। ओके, ये सवाल। नहीं नहीं, आपके पास है? हाँ ये सवाल है, ये सवाल नहीं है। है। आपके पास दो ऑप्शन है, या ये आपके पास है या नहीं है। नहीं है। अरे मैडम इतना क्यों सोचते हैं मैडम, हमारे पास इंडियन करेंसीज रहती है, कहाँ US डॉलर सबके पास रहता है। नहीं तो है। हमारे नहीं, पास नहीं है, करेक्ट। नहीं है। नो नो। हाँ हाँ करेक्ट, हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा आप इनमें वो मत मत कीजिए ऐसा, जस्ट एन एक्सरसाइज, जस्ट एन एक्सरसाइज, डोंट टेक इट सीरियसली, जस्ट एन एक्सरसाइज। यस तो यस। असल मुझे भी पता है नहीं है, मुझे भी पता है नहीं है, लेकिन क्या रहता है मैडम, कोई चीज कम्युनिकेट करने के लिए कुछ डेमो देना पड़ता है मैडम। एक्चुअली हम हाँ तो फैकल्टीज है ना, तो यस। हम स्ट्रेट, कभी कभार स्ट्रेट कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, हमको इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन करना पड़ता है। ओके। तो अभी एक सवाल फिर से मैं पूछना चाहूंगा आपके पास, आप मुझे $10 दे सकते हैं, US डॉलर अभी,
नहीं, अभी नहीं दे हाँ सकती। मैडम। नहीं, मेरे पास तो नहीं दे सकती। ओके ग्रेट, वेरी। हाँ, हाँ, हाँ। आई your honesty and I'm thankful to you for your interaction. ये सवाल मैंने इसके लिए पूछा था कि एक तो इसका रीजन ये है कि जो हमारे पास नहीं हम किसी को दे नहीं सकते, ठीक है? जो हमारे पास जो चीज नहीं है हम किसी को दे नहीं सकते। तो ये जो पूरा जरा डिस्कशन चल रहा है, वी आर टॉकिंग ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड इम्पैक्ट ऑन यूथ। तो हम चाहते हैं हमारे यूथ बहुत अच्छे हो जाए और इनके अंदर बहुत सारी वैल्यूज आ जाए। तो उससे पहले किसके पास वैल्यूज आनी चाहिए? कोई मुझे इसमें बताएगा? ये हमारा उद्देश्य है ना, ये एफडीपी का, ह्यूमन वैल्यूज एंड इम्पैक्ट ऑन यूथ। तो हम चाहते हैं, हाँ रेस, यस मिस्टर मलक, टेल मी सर। हम चाहते हैं ये बच्चों में, यूथ में आए। ओ सुजाता मैडम, टू द पॉइंट। तो टीचर्स और पेरेंट्स के पास यूएस डॉलर रहेगा तो वो दे सकेंगे ना सुजाता मैडम? Yes. Mm. नहीं रहेगा तो कैसा दे सकेंगे, आप बताइए। हाँ सुजाता मैडम, आप अनम्यूट करके बताइए। होगा तो दे सकेंगे कि नहीं, नहीं होगा तो दे सकेंगे? होगा तो दे सकते हैं सुजाता सर। जी। होगा तो दे सकते हैं सर। हाँ, तो आपको कैसा लगता है? उसमें मैं भी हूँ, आई एम पार्ट ऑफ योर टीम। आई एम नॉट यस सर। समथिंग वेरी एक्सपर्ट और वेरी सीनियर फैकल्टी समथिंग, आई एम आल्सो पार्ट ऑफ योर टीम। मैं भी एक एकेडमिशियन ही हूँ देखा जाए तो। यस सर। सो इसको हमको पहले, हमारे पास थोड़ा है ह्यूमन वैल्यूज, हमको थोड़ा और ऐड करना पड़ेगा ना मैडम, ह्यूमन वैल्यूज। यस सर। यस सर। कि हमारे पास लोडेड रहेगा तो हम बच्चों को दे सकेंगे, नहीं तो हम बोलेंगे बच्चों को कि ये करो ये करो ये करो, और फिर हमारे पास नहीं रहेगा तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी स्ट्रांग हो रहेगा कि नहीं रहेगा। मैडम एक आदमी है जिसके अंदर एम्पैथी नहीं है और एम्पैथी की टीचिंग करेगा तो एम्पैथी पहुंचेगी सामने नहीं। मैडम? एक नहीं आदमी है के पास, अच्छा किसी के पास कोई ऑनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वो ऑनेस्टी की बात करेगा तो बच्चे को समझ में आएगी ऑनेस्टी? नहीं सर। नहीं सर। हाँ, तो आई होप सो, थैंक यू मैडम। तो आई होप सो द पॉइंट आई एम कम्युनिकेटिंग, वी आर गेटिंग इट। तो यू कैन गिव योर फीडबैक इन 1 minute टाइम अबाउट द कम्युनिकेशन, कि हमारे पास आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। यू कैन, आप अनम्यूट नहीं कर सकते, ज्यादा वीडियो में नहीं आ सकते, तो आप मुझे मैसेज तो भेजिए 1 minute में, तो मुझे समझ में आएगा आपका फीडबैक। ये पॉइंट हमको कितना समझ में आया, क्या होना चाहिए, आप टाइप करके भेजिए। मराठी में भी टाइप करके भेज सकते हैं, हिंदी में भी। 1 minute आई एम होल्डिंग, आप आपका मैसेज कीजिए। आप यू गो टू द स्क्रीन और वहां पे मैसेज में जाके आप मैसेज कीजिए कि इसके बारे में गिव अ फीडबैक, और दिस कम्युनिकेशन इज गुड, बैड, गुड, नॉट बैड, एक्सीलेंट, आई हैवंट अंडरस्टूड। अब जो भी आप मुझे फीडबैक दी, एक दो फीडबैक आने दीजिए। सो वी शुड हैव इट फर्स्ट बिफोर वी गिव अदर। ओके, मीनाक्षी मैडम आया, और थोड़े मैसेजेस, तो मुझे भी समझ में आएगा कि मैं जो 60 लोगों के साथ बात कर रहा हूँ वो है। ओके, थैंक यू मैडम, एक्सीलेंट। सीमा मैडम ने भी बोला गुड। और सम मोर, सरिता जी का क्या फीडबैक है? सरिता जी का क्या फीडबैक है? यस, वी हैव ऑल क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, गुड सर। ओके, हर्षला मैडम भी आ गए हैं, गुड। तो ठीक है, तो हमको कुछ कुछ मिल रहा है। और समझो 10 ह्यूमन वैल्यूज में से हमारे पास 7 है, 3 नहीं है, तो हमको 3 लाने की करना पड़ेगा। ठीक है, या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ये एक मॉरल एजुकेशन के ऊपर आई गॉट अ वंडरफुल प्रेस रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आई विल रीड आउट फॉर यू, जिसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज लॉन्च अ पॉलिसी फ्रेमवर्क कॉल्ड मूल्य प्रवाह, guidelines for inculcation of human values and professional ethics in higher education institute. It emphasizes the stakeholder of an institution, be they faculty, student, administration, or others, should be guided by the core values like integrity, dedication, trusteeship, sustainability, inclusiveness, commitment, respectfulness, harmony, and belongingness. फर्दर द एनईपी 2020, अभी एनईपी का कितना सारा बात हो रहा है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो एनईपी भी मॉरल एजुकेशन ह्यूमन वैल्यूज को हाईलाइट करता है। तो एनईपी क्या बोलता है? फर्दर द एनईपी 2020 आल्सो प्रोवाइड्स फॉर एथिकल रीजनिंग, ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज एंड ऑल बेसिक ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सच एज सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, सत्य, then it's not so clear to me, shanti, sacrifice, tolerance, diversity, right, gender sensitivity,
respect for elders. अब कोई faculty ने बोला बीच में कि respect for elders, which is not there. And see, government is also concerned that there should be respect for elders. Okay, so irrespective of any background, open the people. Okay, irrespective of any background, we have to go for it. Next slide, please. Next slide, please. Okay, very quickly we will see a wonderful video. And this video is what I'm sharing. This had crossed crores views. मतलब few lakhs नहीं, crores में ये views cross हो गया. I believe ये video का ही कुछ almost 5 crore and above का views है. So we should not miss out. So I can request Kalekar madam if you run this video for us, Yes, sir. please. Yes, sir. On human values. देखो वहाँ लिखा होगा 10 most important human values. वो rename label में Yes, लिखा sir. होगा madam video के. Yes, sir. Yeah. I request all the participants to very peacefully watch this video, and I will ask questions on this, please. Voice is not there. Just a second, sir. Just a second, huh, sir.
by the time they are doing it, just a query to any of the faculties, I believe. Anybody's teaching AI/ML in the group? Anybody's teaching AI/ML, artificial intelligence and machine learning? Am I audible? Yes, you're audible. Yes. Uh, Anybody's teaching AI/ML, artificial intelligence, machine learning in the group? Okay, no one. Okay, okay. So what are the subjects normally been taught at your end, ma'am? What are the subjects normally, the branches you are having at your end? Okay, I believe we'll talk later. They are up with their video. All right, electronics. So basically, the diploma courses. Well, automobile is there at your end, ma'am? Automobile is there? Okay, automobile. Civil engineering is there? Civil engineering? Civil engineering is there? Oh, civil engineering. So I mean, who's teaching civil engineering here in the group? Who's teaching civil engineering here in the group? By the time they run the video, okay, Rahul ji is there. Kasib Malik, Mr. Kasib Malik there. Okay, so for just for a knowledge base, uh, currently there are 50 odd MBA colleges. And am I audible? Just raise a pause now. Otherwise, if I'll talk, people don't understand. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, actually, yeah, there are 50 odd institute in Mumbai, 50 to 60 institute in Mumbai for MBA. You know, so many institute are there. But only 3 institute is having MBA in real estate. Because apart from academician, I'm also an entrepreneur. With the entrepreneurship, I'm also into real estate development. So this query I has put up for the civil engineering branch is that we are 3 institute are offering real estate management course, that MBA in real estate. So one is HSNC University, which is Hyderabad Saint National Collegiate Board. They are having Niranjan Hirandani School of Management and Management Real Estate at Worli. Then at Narsi Monji School of Business Management, they are having this MBA in it. Trinity University at Panvel. So these 3 institute are having MBA in real estate. So I suggest if any of your civil engineering student after their diploma, they can opt for a degree. After degree, they can do their MTech or ME. Or if they wish to go for, they can go for a PG in MBA in real estate in any of this thing. So that's from the knowledge point of view, helping the student because in my class, if I teach this MBA real estate student, so there are 3 categories in my class. So one set is architects. So basically, architects are my student. Secondly, engineering students, civil engineering students are my student, and sons and daughters, the children of mid-sized developers. So this the category normally I've seen in my class. I'm also having civil engineering degree students. So at your end also, if any of them wish to explore more in their career, they can offer real estate management. This is purely from the knowledge point of view. Thank you. Yes, madam, you can run the video, please. Yes, sir, but the voice is not coming for the video. The Kalikar madam is handling. It's not in my hand. She is handling. Just bear with us. टेक्नोलॉजी का प्रोस कॉन्स दोनों है मैडम. It's The also video easy, but is it's also. playing, but the voice is not there. Shall I try from my end, madam? If I Yes, can sir. present, shall I try? Yes, Kalikar madam, shall yes, I try from? Let yes, me see sir. because I'm also having on my desktop. Okay, If sir. it You it can If gets it is available on share your YouTube, open that can desktop. also be faster, tried. Yes, sir. Kalekul madam, if it is available on YouTube, I that have can to go also for be a possible. presentation. Okay, okay. Just give me 1 minute if I can do.
Is it visible? Is it visible? Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. Voice is there. Voice is there. Voice is No, there. Voice is No, coming. sir. no, No, Voice sir. is coming. No voice. No, no, Voice is not. no. No voice No, coming. Voice is not coming. My voice is not coming. I'm pressing. I'm retry. sir. Try YouTube if it is available. Oh, okay, on the YouTube link. Shall I give the Yes, yes. YouTube link? But how we will run? On this screen No, no, itself, no, no. You run visible it, here. sir. You Then run it on YouTube, sir. You then run it on YouTube and share your screen. or you wish me, or shall I give the link on the message? Somebody will run it. We'll do that way. Yes, sir. That will also do. yes, sir. You can put it on message, sir. Okay. So somebody will just pull out and take note. So this is for okay. Select and use the share the link. I will share the link. Because there on my desktop. Let me try the presenting part if I can just give me one try. Let me try once if I can. Okay, I will do one more thing. Voice is coming. Voice is there. No, no, sir. Not yet. Ma'am, voice is there. Voice is not there. No, sir. It is not audible. Okay, I will. Okay, I'll give you the link. I will give you the link. Just give me the most 10 motion. I will give you the link. Just give me 1 minute. Yes. I will give you the. Just give me 1 minute. So now what I will do, stop sharing in the message. Okay, good. This is the thing what had sent. Everything you think, everything you feel, every action you take is because of your beliefs and values. You may not be aware of it, you may not be conscious of it, but your values shape your decisions, and your decisions shape your life. If you value money more than happiness, your life might be full of expensive things, but there will be no joy in that experience. Your values signal what is important to you. They are emotional states that show you what is important and what you want to experience. Imagine how different your life would be if you changed a value of money and replaced it with the value of love. Creating and stating your values consciously can change the direction of your life. If you decide to apply any of these values to your life, in your own words, in your own way, your own life will be one of more value. The following are the 10 most important human values. Why is that 99% people who read Think and Grow Rich but are still unable to think and grow rich? Well, that's Number 1, health and energy. This might be the most important value of all to some people. It will be the most important value of all to some of those who have experienced serious health problems. Without physical health, it is very unlikely you can experience and enjoy all other values at their deepest levels. Great health gives you energy and vitality.
which enables you to dive deeper into the more important things in life and give more energy and time to those you love. Make the value of health and energy a priority in your life by learning what daily nutrition and exercise is best to fuel your body. What would it take for you to be at your physical peak? Learn it. Apply it. Number 2, love. The overuse of this word makes it easy to misunderstand the true meaning of it. This is not just romantic love, but love of all things. True, non-judgmental love. The love you have for your family, your friends. The love you have for your favorite things. The love you have for your passion and your mission. Making love a priority in your life means there is no room for hate or indifference. You could experience love doing anything or with anyone. You could experience love in yourself, by yourself. How would your life change if you valued love higher? Number 3, gratitude and appreciation. There's truly no greater power on earth than gratitude. Real gratitude shuts down all other negative emotions in the moment. So how important is gratitude to you? Well, how important is it for you to feel good? If it is important, you must make gratitude a top value and practice it as a priority every day. It costs you nothing, but it makes you so rich. It takes nothing away from anyone else, but it gives you so much power. How much more magical would your life be if you lived in a constant state of appreciation for everything that is great in your life? Number 4, kindness and compassion. The world would certainly be a better place if people showed more kindness and compassion. Less judgment, more respect. It's placing yourself in someone else's shoes before you judge them. Have you ever noticed how good it feels when you are kind to someone for no reason? It feels good to be kind because it is right to be kind. What would your life be like? What would your world be like if you valued kindness and compassion more? Number 5, integrity. Knowing you do the right thing, even when no one is watching and no one will know either way. The inner knowing you always do what is right. That brings pride and it brings inner peace. When you value integrity, you value doing what is right. It is such a powerful value that not only makes a difference in your own life, but also sets a powerful example to all those close to you. It brings honesty and trust. How would your life be different if everyone knew you as a person of integrity? If you're someone who procrastinates a lot, no matter how hard you try, but you cannot get things done, then listen to me for the next one. Number 6, giving. This ties in with kindness and compassion. As humans, we are built to give. Not just give money or things, but give ourselves fully to others in need, to serve selflessly. Karma always ensures what you give is returned, but that is not why you give. You give because that is your nature. It's not an effort, it's natural. It feels good, and you know there is no lack. How differently would you feel if you valued giving higher in your life? Number 7, growth. Human beings are wired to grow. Growth comes from experience, from learning, from failures, from achievements, from intention. Intention to get better. This doesn't mean get better so you can win. It means getting better so you can give more to the world, so you can experience more, enjoy more. It's about becoming the greatest version of yourself, not just for yourself, but for others.
setting the example of what is truly possible, reaching your highest potential with intention. How much better will your life be when you value growth higher on your list? Number 8, peace. Peace. Nothing more needs to be said. It's getting to that place of needing nothing. It's being alone and being in bliss. It's presence. It's reactionless. It's the silence at the peak of the mountain. How high do you value peace? How much better would your life be if you had more peace in it? Number 9, family, friendship, and connection. It's caring about someone more than you care about yourself. It's putting others first. It's making time for people you care about. It's giving the people you love, and maybe even strangers, your complete presence and building that connection. It's making someone else's day better just because you were in it. It's bringing your best self to every encounter so the other person walks away with a smile. How different would your life be, and countless others, if you took this approach? Will you value connection higher on your list? Number 10, happiness. It's joy. It's playfulness. It's fun. It's non-seriousness. It's a state of real happiness when time stops and you love what you are doing. It's what we all seek, but we do it in so many different ways. Some try to find it through money, but no type of paper is going to bring it to you. Some try to find it through achievements and success, but they come up empty. It's within, and it's a choice. It's always available and never on sale. You decide when you make this a priority and a top value. How different would your life be if you had happiness as your highest value? Yeah, thank you very much. We can close the very quickly. This is to the participant, which which is one human value, could be part of this 10 human values or could be anything from outside. You just tell me which is one human value which you wish to retain for life, which you wish to retain for life. Just tell me one human value which you wish to retain for life, or 2 or 3 human values can also be there, but at least one human value which is to retain for life. For example, in my case, I really like 3 human values. Yeah, health. Great, Shuklaji. One is empathy, one is integrity, and one is respect. I'll share yours. Shubhangi ji is saying happiness, peace, health. Wow, good. Some more. Your resolution, health and peace. Okay, everybody is very health conscious. Great. Harmony, empathy, Greg. Okay, sorry. I wish to borrow gratitude from Meenakshi madam. Gratitude is again very important. Thank you, Ram Patil sir. Gratitude is very important stuff. So I wish to add the 4th one as gratitude. Dedication toward one goal, health, empathy. Rahul ji, dedication towards one goal, we can't say it's a value. So you can come up with a specific value like integrity, empathy, respect. Mr. Rahul Ray, you can come up with a specific value if you can. Happiness, health, peace. Yes, Sonali ji. So I believe in the group, what is the baseline I'm picking up is majorly people are looking for health. People are very, that's a good thing. So the group is also looking for happiness and everyone peace. So no one wants headache. Everybody wants peace. Yeah, caring, happiness, peace. Yeah. Rahul ji, you wish to highlight any specific value from your side? Specific value from your side? Out of these 10 values, anything from outside? Sarita madam, Trupti madam, have you shared? Chetan ji,
Have you shared yours? Sympathy. Okay, you can sympathize with people. The way I believe in that, in the case study, we have seen sympathy. Okay, health, happiness, integrity. Thank you, ma'am. Sarita ji, what is yours? Okay. Next slide. Kolekar madam, next slide, please. Yeah, gratitude. Thank you, Bhole ji. Am I audible? Kolekar madam, next Yes, sir. slide, please. Yes, sir. Next Just a slide, second. next slide, please. Sure. Is it Okay, visible? so we are going to talk. Yeah, visible. So we are going to talk on ethics now purely. So ethical and ethical. So before I get into more, yeah, thank you, Sarita ji. Before we get into more, can anybody tell me, can we decode ethic per se? What do you mean by ethic? Which is what is ethic? What is unethical? You can give me an example of it. Yeah, happiness and honest. Okay, Sandeep ji. Yeah, now we will jump on to ethics. Can anybody please tell what is ethical and what is unethical? Either a definition or a key, What is correct is or ethical, what feel is this is incorrect ethical is and this is unethical. unethical. What is correct is ethical, and What what is is correct is incorrect so I that is unethical. हाँ In terms of morals, मैं values. थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई इंग्लिश में ओके तो मैं मैडम उसको यू आर 100% राइट सो आई जस्ट विश टू मेक इट इन अ सिंपल इंग्लिश इट्स व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग ठीक है मीनाक्षी जी इट कुड बी करेक्ट इफ आई से व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग Sure, हेलो sir. मीनाक्षी मैडम Yes, yes, sure. Yeah, it yeah, is sir. right if Correct. I'll say what is right, what is wrong. Okay, so Okay, okay, sir. great. Thanks. So ethical and ethical, a lot that could be a lot of quantification definitions of it. But in short, what Meenakshi has put up, what is correct and what is incorrect. I wish to make it more simple in English is what is right, what is wrong. So we as a human being, it could आपका हृदय कहता है आप दिल बोले चीज सही है या चीज गलत है एक मनुष्य में ईश्वर ने एक चीज डाली है कि वो जजमेंट ले सकता है कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है या आपका दिल बोलेगा या आपका दिमाग उसको गाइड करेगा या आपका कॉन्शियस उसको बोलेगा कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है या आप बोलेंगे नहीं 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 ये सही चीज है सो that's how you can make the judgment at your next slide please ma'am next slide please Kolekar ji next slide. Oh, so we will decode ethics. Yeah, next. Next slide. Yeah, next slide, please. Okay. So in ethics, as we are decoding ethics, so what we are saying is that what is right, what is wrong, what is correct, what is incorrect. क्या सही है और क्या गलत है. अब हम क्या करते हैं सही तो बहुत सारी चीजें रहती है. We will try to locate what is wrong. We'll try to locate what is wrong. So what is wrong, what is non-ethical. So basically things, there are various reasons. I will share my reason, then I wish to hear from you your reasons. Okay, why things are wrong. So this is, we are discussing on non-ethical things. What is wrong? What is incorrect? गलत क्या है? तो जो मेजर रीजंस गलतियों के होते हैं, लोग गलत काम करते हैं, उसमें एक रीजन ये होता है कि उनका अपब्रिंगिंग कैसा है. जो भी आदमी गलत काम करता है तो उसका अपब्रिंगिंग से बहुत कनेक्शन रहता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड से कनेक्शन रहता है, उसका नेबरहुड से कनेक्शन रहता है. एक रीजन ये हो सकता है कि वो कहाँ से आया है, मतलब उसने काफी गलत चीजें देखी है तो गलत काम कर रहा है. फिर एक चीज हो सकता है कि वो किसी से इन्फ्लुएंस होता है तो गलत काम करता है. दे डू अनएथिकल थिंग, चीटिंग करता है और फिर डिसऑनेस्टी करता है, चोरी करता है, बहुत सारे गलत काम करता है. तो किसी से प्रभावित होता है और वो सोचता है कि वो एक आदमी गलत काम कर रहा है और उसको इतने पैसे मिल रहे और वो कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं. तो किसी से इन्फ्लुएंस होके करता है. कुड बी वन ऑप्शन, वो बहुत सारी चीजें गलत देखता है. अभी सॉरी टू से दैट नाउ इफ यू सी इन द न्यूज़ेस और इन द सोशल मीडिया, 2-3 इशू पे ही बात होती है. या क्राइम पे बात होगी या क्रिकेट पे बात होगी या बिजनेस पे बात होगी या पॉलिटिक्स पे बात होगी. 3-4 विषय पे बात होती है. बहुत कम हमको देखने मिलता है कि कोई मॉरल एजुकेशन पे बात करता है, कोई क्वालिटी एजुकेशन पे बात करता है,
तो बेसिकली देखा जाए तो व्हाट यू सी व्हाट यू कंज्यूम। अभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो मूवीज बनती है और ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी आजकल जो चीजें आती है, इतना क्राइम हाईलाइट होता है कि आदमी कितना क्राइम देखता है। सो उससे आदमी इन्फ्लुएंस भी होता है बहुत सारी चीजें देखने से। तो व्हाट यू सी इज व्हाट यू कंज्यूम, व्हाट यू कंज्यूम इज व्हाट यू डू, व्हाट यू कंज्यूम इज व्हाट यू डू। मतलब आप इन्फ्लुएंस होते हो। मतलब वो एक बच्चा जो है, एक यूथ है, वो इतनी सारी चीजें, एक बच्चा है हम देखते हैं हमारे कॉलेज के बाहर, वो बाइक का स्टंट करता है। और वो बाइक का स्टंट करता है तो कहीं पे तो देखा होगा ना बाइक का स्टंट। फिर हम देखते कॉलेज में, मुझे पता तो नहीं आपके कॉलेज में होता है क्या नहीं, मैं कॉलेजेस के नाम नहीं लूंगा, मैंने काफी कॉलेजेस में देखा, वो बच्चे लोग बहुत अजीब से कपड़े पहन के आते हैं। वो जीन्स पहनते हैं, बहुत अजीब सी जीन्स पहनते हैं। और वो लोग बहुत अजीब से जो है कपड़े पहन के आते हैं। और और वो बैंगल्स हाथ में रखते हैं और क्या क्या, वो मतलब एकदम पूरा अजीब दिखता है वो लोग। तो मतलब वो लोग कहीं पे तो वो चीज देखा होगा ना, वो लोग स्टूडेंट्स ने वो चीज को देखा होगा। तो मतलब उनका स्लैंग्स यूज करते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे स्लैंग्स यूज करते हैं, बहुत सारे वो लोग ऐसे स्लैंग्स यूज करते हैं विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो कंसिडरिंग दिस रीजंस, आपने आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा है? यू बीन आल्सो द फैकल्टीज and the lecturers in your institute, what could be the reasons? मतलब लोग गलती क्यों करते हैं? Why people become unethical? What is your reason? You can unmute and share with me, or you can write in the message also. आपका रीजंस क्या है? ये मेरा ऑब्जर्वेशन मैंने शेयर किया। Why people become non-ethical? लोग क्यों गलती करते हैं और गड़बड़ी करते हैं? What is your reasons? Because they are getting influenced by some sort Yes. of people. मतलब किसी Getting को किसी से influenced. इन्फ्लुएंस रहते हैं, इसके लिए वो गड़बड़ी करते हैं वो लोग, बच्चे। गलत ओके, संगत में रहेंगे तो ओके। फिर गलती सम मोर, करेंगे। हाँ जैसे, हाँ जैसे जैसे मतलब जैसे नेबरहुड में रहेंगे या जिसकी संगत में रहेंगे, वो संगत का असर करता है। एक बहुत अच्छा चीज मैंने देखा कि आदमी वो कोयला रहता, कोयला, कोल, मराठी में कोयले को क्या कहते हैं मैडम? जो कोयला रहता है, ब्लैक कलर का कोयला आता है, कोल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। कोळसा 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 हाँ, कोळसा हाँ, ओके। कोळसा तो कोयले की दुकान में आदमी जाए, हाँ कोलसा, कोलसा, ओके, कोलसा। तो कोयले की दुकान में आदमी जाएगा, कुछ काम नहीं भी करेगा तो उसके कपड़े गंदे हो गए कि नहीं मैडम? उसके कपड़े गंदे हो गए कि नहीं? कोयले की दुकान में वो जाएगा तो हाँ सर यस श्योर होंगे। हो गए। और वो परफ्यूम की दुकान में जाएगा तो वो परफ्यूम की दुकान में जाएगा तो क्या होएगा संदीप जी? इत्र की खुशबू आएगी। खुशबू आएंगी सर उनकी बॉडी की। खुशबू आएगा। हाँ, खुशबू आएगा। सही। तो ये मीनाक्षी मैडम जो बोल रहे हैं संगत, तो संगत यही है कि जिधर उठेगा, बैठेगा, जिनसे बात करेगा, जो चीज देखेगा तो आदमी वैसा बनेगा। इसके लिए आप देखो, दिस इज, आई हैव सीन, आई कुड बी रॉन्ग, आई डोंट नो, दिस माय ऑब्जर्वेशन, आप लोगों ने भी देखा होगा। हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को देखते हैं या कोई एक सेलिब्रिटी को देखते हैं और किसी की बात से बहुत इंप्रेस्ड होते हैं। तो क्यों होता है मालूम? उसकी एक वजह ये भी रहता है, एक रीजन ये भी रहता है कि उसका कंजम्पशन वैसा है। उसने कंज्यूम, उसका जो कंजम्पशन है ना, वो वैसा है। मतलब वो वैसी किताबें उसने पढ़ा होगा, वैसे लोगों के बीच में रहा होगा, वैसे लोगों को उसने सुना होगा, तो उसका जिस प्रकार का रहता है, और तो वैसा आदमी बनने की कोशिश करता है। कोई और रीजन आदमी क्यों नॉन एथिकल रहता है? सम मोर पीपल अपार्ट फ्रॉम मीनाक्षी जी, संदीप जी, राम पाटिल सर, आपका क्या ओपिनियन है? राम पाटिल Sir, सर। I think in sir, yes, sir. Am I audible? यस, यस, यू आर Hello. ऑडिबल सर। Actually, यस सर, यू in आर ऑडिबल। some yes, sir. In some movies and some TV serials, no, sometimes the crime is glorified to such an extent that these youngsters they feel that this is only the way of life. I mean, see the way the Maya Bhai was, then Mr. Dawood Ibrahim was also glorified, Mr. Gaudi is also glorified, राइट, and these people think that whatever is shown on the cinema, that is only the reality, but हाँ, nobody knows about the dark side of it. And these youngsters, obviously, they are at this such a fragile age that they get deviated and they feel that this is very cool. And I think this media plays the major role in just disturbing the mindset of these youngsters. अभी सर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में जो कंटेंट आता है उस पे क्या आपका फीडबैक है? जो अभी करंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में जो My कंटेंट आते हैं। goodness.
My goodness, sir, there is no need to talk about it because OTT is, I don't know, they have all liberty. I mean, there is no censorship, so they take their own advantage of this and see the TRP. Even the people, they also like the Very dark dangerous. side. Yes, sir. As we say No, that forbidden fruits are the sweetest, and people go on watching them. so very dangerous सर दिनेश लोहार। दिनेश सर, आपका कोई फीडबैक है? हाँ सर, in my हेलो opinion, सर, there आप may be some occasions in his life which may cause injustice अच्छा, sometimes or dissatisfaction. वो रिवेंज में चला जाता है, फिर वो रिवेंज में चला जाता है सर, फिर वो बच्चा रिवेंज में जाता है बड़ा होके। हाँ, फिर उस so sometimes there is a inferiority complex developed because of partial behavior by some family members or in organization. So because of that, it may create. मुझे सर इतना खुशी हो रहा है, आई एम टॉकिंग टू सच अ वंडरफुल क्लास ऑफ इंटेलेक्चुअल्स के आप लोगों का हायर लेवल ऑफ मैच्योरिटी, हायर लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, और ऐसे सेशंस में, ऐसे प्लेटफॉर्म में, देन टू ऑनलाइन है। लेकिन आई मीन वी आर, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू इंटरेक्ट विद यू, जो बहुत कम हमको भी मौका मिलता है for such kind of a quality discussion. Thank you very much to all of you, sir. Okay, so these are the major reasons what we have seen. हम अभी नॉन एथिकल की बात करें, हम अभी बुरी बातें कर रहे हैं, क्योंकि क्या अच्छी बातें हर कोई करते रहते हैं, तो वी आर टॉकिंग ऑन द डार्क साइड ऑफ दैट एथिक पार्ट। सो जितना बुरा समझ में आएगा अच्छा बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। आई मीन दैट्स वन ऑफ द कॉनोटेशन व्हाट वी हैव सीन। सो अभी हमारा जो सेकंड पॉइंट है, कलकर मैडम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमारा जो सेकंड स्लाइड है करंट स्टेटस। तो नॉर्मली एथिक्स के अंदर इसमें अच्छा या बुरा दोनों आ सकता है करंट स्टेटस में। तो एक आप कोई मुझको ऐसा कोई एग्जांपल बताइए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ एथिक्स का। जैसा हम न्यूज़पेपर्स में बहुत पढ़ते हैं कि एक रिक्शा ड्राइवर ने कोई महिला का पर्स रिक्शा में रह गया था जिसमें पैसे थे, उसकी ज्वेलरी थी या क्रेडिट कार्ड से लौटा दिया, या बस कंडक्टर को किसी का पर्स मिला या किसी का बैग मिला, उसमें पैसा था या मोबाइल था, लौटा दिया। तो न्यूज़पेपर्स में भी ये बहुत सारी चीजें आती रहती। तो दिस इज इन अ मैटर ऑफ इंटीग्रिटी, दिस इज मैटर ऑफ गिविंग बैक। वो उसको लगता है नहीं ये अनएथिकल है, मैं ये घर पे लेके चला जाऊंगा। तो ऐसा इंसिडेंट किसी के सामने कभी कुछ आया है या किसी ने कुछ पढ़ा है तो प्लीज शेयर कीजिए। करंटली अभी करंट लेवल क्या है एथिक्स का, समाज में एथिक्स है नहीं है? मुझको तो लगता है एक अच्छे लेवल तक है। तो ये एक एग्जांपल्स है ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के, बस कंडक्टर्स के। आपने कोई ऐसा एग्जांपल देखा है जो समाज में अभी भी हाई लेवल ऑफ एथिक्स है? हैव यू सीन एनी ऑफ दिस? हैव यू कम अक्रॉस एनी ऑफ दिस इंसिडेंट, ऑब्जर्वेशन, एनी एग्जांपल? आप हमको मराठी में भी दे सकते हैं, गुजराती में भी दे सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, ऑल वेल रिस्पेक्टेड। हेलो। सुजाता मैडम, यस यस मैडम। हाँ हाँ सर, अभी का इंसिडेंस है मेरे साथ। पवार मैडम है, तो उनका पर्स ऑटो में भूल गए थे वो। तो ओके ऑटो में उनके साथ और एक जेंट्स थे, तो उन्होंने वो रिटर्न कर दिया। तो ये अभी का ही ओके। एक्सपीरियंस है। तो इथिक्स अच्छा, है वो सर। ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने किया मैडम? और नहीं, उनके साथ वो जो ऑटो रिक्शा एक जेंट्स जो थे। को पैसेंजर, को हाँ, शेयर को ऑटो में। पैसेंजर थे, हाँ, को पैसेंजर। तो अच्छा, उन्होंने शेयर ऑटो वो में, रिटर्न ओके ओके किया, वो खुद फोन करके उन्होंने उनको रिटर्न कर दिया। ओके। तो मतलब ये बात से खुशी ये है कि आज भी समाज में है हाई सर, लेवल ऑफ है इंटीग्रिटी, सर। हाई लेवल ऑफ एथिक्स है। बुरे यस। लोग नहीं है ज्यादा, अच्छे लोग भी है। हाँ सर, हाँ एनी सर। वन मोर इंसिडेंट बिफोर वी गो नेक्स्ट, वन मोर इंसिडेंट बिफोर वी गो नेक्स्ट, वन Yes, मोर sir. इंसिडेंट। हाँ Sir, पाटिल सर, I am really tempted to talk about बोला this. साहेब, बोला। Actually, actually काय झालं होतं, त्यावेळेस एसटीडी बूथ होते बघा, तुम्हाला आठवत असेल. त्यावेळी आपण कुठे एसटीडी कुठे बूथ मध्ये थे? जाऊन फोन करायचो. एसटीडी बूथ एसटीडी मध्ये बूथ, आपण जाऊन फोन अलियर करायचो अलियर आणि पैसे अलियर होते। हा पैसे पैसे पे करायचे. मी करेक्ट, आय वॉज डुईंग माय पोस्ट ग्रॅज्युएशन देन इन पुणे युनिव्हर्सिटी. माझा मित्र एक ओके किशोर नावाचा, त्याने एक एसटीडी बूथ वर घरी ओके फोन केला. एक 4-5 रुपये काहीतरी बिल झालं असेल आणि काय झालं, बिल न देता आम्ही निघून आलो तिथून.
आणि निघून गेल्यानंतर एक हार्डली एक 50 मीटर गेल्यानंतर किशोरला समजलं की यार मी पैसे नाही दिले. मी त्याला म्हटलं नॅचरली आणि नॉर्मली, अरे बरं झालं 4-5 रुपयामध्ये आपण एक एक कटिंग पेऊ. तो काय म्हटला, नाही तू इथेच थांब, मी त्याला पैसे देऊन येतो आणि मग आपण पुढे जाऊ. ही लिटरली वेंट बॅक, ही गेव हिम द मनी अँड देन केम बॅक. आणि ही फेल्ट रिलीफ की अरे यार मी बरं झालं त्याला पैसे दिले. सो दीज आर सच काइंड ऑफ पीपल आर ऑल्सो देयर. दे हॅव द, इट इज इन बॉर्न. राइट राइट राइट. आई विल कनेक्ट पाटिल सर, आपका जो इंसिडेंट है ना, ये इसको मैं कनेक्ट करता हूँ. एट टाइम्स आई ट्रेवल यस सर, इन द यस कार, सर. तो आता है ना टोल बूथ रास्ते में, तो कभी कभार माय ड्राइवर ट्राई टू बिकम लिटिल स्मार्ट. हाँ, आई मीन आई एम ऑनेस्टली शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस. किसी और का नहीं, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है. सो वो बोलता है कि सर मैं थोड़ा स्पीड में ले जाता हूँ ना, वो टोल नहीं देना पड़ेगा. हमारे यहाँ पे एक वाशी टोल है जिसपे 35 रुपीज टोल देना पड़ता है. तो मैं उसको बोलता हूँ कि बॉस तुम वहां लेके चले जाओगे, हम 35 रुपए का बचाएंगे, 35 रुपए का तुम करोगे क्या? आपका कॉन्शियस बोलेगा कि आपने चोरी की. राइट. सो देर आर मेनी पीपल, उनको ऐसा स्टाइल रहता है ना कि मैंने टोल का पैसा नहीं दिया. आप समझे पाटिल सर, आदमी को रहता है ना मैंने यस टोल सर, का पैसा नहीं यस सर, दिया. तो यस. वो 35 रुपये आप क्या बचा के करोगे क्या सर, आप वो 35 रुपीज का? सो दैट इज अगेन योर कॉन्शियस एंड योर एथिक्स टॉक कि नहीं मुझको ये पैसा देना है और यू हैव टू पे. सो गुड, करंट स्टेटस हमने अच्छे से कवर कर लिया. तो आज भी जो मैडम ने भी मीनाक्षी मैडम ने भी वो नहीं सॉरी सुजाता मैडम ने भी जो शेयरिंग किया वो हिसाब से थिंग्स हैपन. नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज कॉलेकर मैडम. inculcate among youth. So we have to inculcate good qualities among youth. I will give my example because I attend a lot of workshops, physical workshop for 2 days, 3 days, offline workshops. Pay close to some 25-30,000 to those trainers to learn it. तो बहुत सारे टेक्निक्स में से हमको एक टेक्निक ये भी बताते हैं वो कि आप लोग हाथ में बैंड पहनो, जो हम नॉर्मली बैंड पहनते हैं ना, कि हाथ में बैंड पहनो. और हम इंसान है, वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारे से गलती होता ही है. तो जब भी गलती होने के बारे में सुनो ना, सोचो ना, तो वो पिंच करो, या अपने बॉडी को पिंच करो या बैंड को खींचो, तो आपको याद आ जाएगा नहीं नहीं अभी ये गलती नहीं करना चाहिए. तो वो बैंड का एक है. देन वी हैव टू स्टॉप, जैसा बहुत सारा एक रॉन्ग डूइंग एक इंसान में मनुष्य में रहता है, तो 10 रॉन्ग डूइंग है, तो वो कोशिश करे कि सब तो नहीं एक साथ खत्म हो सकता, एटलीस्ट 2-3 जो बड़ा है वो स्टॉप करने की वो कोशिश करे. That's how we can run. I mean, you can also share how we can inculcate this values in youth. मतलब youth में हमको कभी values inculcate करना है, तो what is your feedback or what is your opinion on this? जैसा हमारे बच्चे students है, इतने सारे values हमको पता है, तो हम बच्चों में इसको inculcate करना चाहते हैं, उनके अंदर डालना चाहते हैं, तो कैसा करना चाहिए? What is your opinion? अभी लास्ट 2 दिन में भी आपने एफडी पे में सुना होगा. So any of your opinion on this? How we can inculcate this? So basically मेरा एक ओपिनियन है कि हम 50 वैल्यू की बात करें तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. हम 2-3 वैल्यूज जो आपको स्ट्रॉन्ग लगते हैं, जैसा आपने आपका ओपिनियन भी दिया, जैसा व्हेन आई वाज आस्किंग द ओपिनियन, एवरीबॉडी हैज गिवन बाय काउंसलिंग, यस एवरीबॉडी हैज गिवन द ओपिनियन ऑफ हैप्पीनेस, हेल्थ, पीस, मतलब जो आपको क्लोज टू योर हार्ट. तो दोस एटलीस्ट दोस वैल्यूज विल ट्राई टू इनकलकेट. रिस्पेक्ट की बात करें तो रिस्पेक्ट टू ऑल में चले जाए. हैप्पीनेस की बात करें तो बच्चों को हैप्पीनेस सिखाए. लव एंड हार्मनी की बात करें तो बच्चों को लव एंड हार्मनी सिखाए. So whatever you are good at, see we are not good at all the 50 odd human values or 100 odd human values. We are good at 2-3, और वो 2-3 हमारे पास है भी, हम खुद करते भी है. तो जो हम खुद करते हैं, जो हमारे पास है, this is the way, you know, practice is the best master. So and it's the best preacher. So what you practice, if you can teach that, you can train them, it will be easily implemented in the student. अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे माइंड में आया ये चीज को लेके. बहुत सारा अनएथिकल चीजें हैं समाज में, बहुत सारा अनएथिकल चीजें हैं, बहुत सारा एथिकल चीजें हैं. तो हम बहुत बुराइयों की बात करते रहते हैं, बहुत सारा अनएथिकल चीजों की बात करते रहते हैं, चीटिंग की बात करते हैं, और फिर बहुत सारी खराब चीजों की बात करते रहते हैं. तो माय सजेशन एंड माय ओपिनियन, आई मीन आई कुड डिफर, यू कैन आल्सो ऐड वैल्यू टू द डिस्कशन, कि हमको क्या करना चाहिए. हमको वो बुराइयों की बात नहीं करना चाहिए, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है. हम क्या करना चाहिए, एक रूम है,
एनी अंधेरा रूम है, वो डार्क है, वो हॉट है, वो ऑन रूम है, हमको वहां नहीं जाना। तो हमको बुराई की बात नहीं करना। रोशनी लेके आ जाए, करेक्शन की जितनी आप बात करोगे तो अच्छाई जो है बुराई चीज को जो है खत्म कर, तो इन के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So we should make certain resolutions. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 could be more resolution, but I could suggest we try to go for 3 resolution at least, or we can go for 1 resolution. So you know, this is the thing I wish to do it for my student. मैं अभी बच्चों में एम्पैथी का फोकस करूंगा, मैं बच्चों में रिस्पेक्ट के बारे में फोकस करूंगा, मैं बच्चों के अंदर एथिक्स के बारे में फोकस करूंगा। तो मैं आई एम सजेस्टिंग ऑल ऑफ यू to make a resolution and tell me what exactly you wish to focus, either a human value or what you wish to do. I mean, you can what you wish to focus, what resolution you wish to make. Resolution is basically doing, कि हमको ये करना है तो हम बच्चों के लिए ये करेंगे और बच्चों के साथ ये करेंगे। तो आई सजेस्ट यू कैन शेयर अ रेजोल्यूशन विद अस, विद द ग्रुप। मैसेज में आप पुटअप करेंगे या अनम्यूट करके बोल सकते हैं, तो आई एम ओपन फॉर इट। व्हाट रेजोल्यूशन यू विश टू मेक? will do this thing right or I will not do this wrong. Okay, yeah, human values। एक ह्यूमन वैल्यूज कैसा हो जाता है, ह्यूमन वैल्यूज एक बहुत जेनरिक है, हम एक पर्टिकुलर वैल्यूज पे बात करें, रिस्पेक्ट है, एम्पैथी है, इंटीग्रिटी है, एथिक्स है। सो वो क्या एक या दो या तीन चीजें आप बच्चों में करना चाहते हो, हम ऐसा रेजोल्यूशन बनाए। प्लीज शेयर द रेजोल्यूशन। Okay, harmony, respect and empathy you wish to, Meenakshi madam wish to focus among student, as I believe even FDP के पहले भी मैडम कर रहे थे और अभी FDP के बाद भी मैडम करेंगे, हम आशा करते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। सम मोर प्लीज। सरिता जी कुछ बोलना चाहेंगे, संदीप सर है, पाटिल सर है। रिस्पेक्ट टू अदर्स, हम बच्चों को रिस्पेक्ट सिखाएंगे। सुजाता जी वेरी गुड। सम मोर। कालेकर मैडम का कोई रेजोल्यूशन है? कालेकर मैडम का, Yes, sir. सोनाली Sir, मैडम। my resolution is also same. Like I want to teach students that they should respect teachers and elders, and to do करेक्ट। that, I tell students, like not tell first. Whenever I see them, ओके, I greet them good morning, good afternoon, good evening myself. राइट। And when I see them, I also tell them whenever they see any other department faculties or senior lecturers, they should wish them properly. Good evening, हाँ, good रिस्पेक्ट। afternoon. इनको So ऐसा that देखिए ये that हमारे क्लास way, टीचर है, तो ये क्लास टीचर को बहुत रिस्पेक्ट। yes. So it should not be like that. But यस, whatever faculty they see them during the day, they should wish them the good morning, good afternoon. So that way they can learn to give respect to the elders. during the discussion while I was talking to Kalekar madam, Kamle madam has shared something. I just missed out. Can you repost it, madam? आप फिर मैसेज करेंगे? कामले मैडम, आप वापस से रीपोस्ट करेंगे आपने जो पोस्ट किया था? ओके, बोले सर कहते हैं पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, केयरटेकर ऑफ अदर्स, बी अवे फ्रॉम वायलेंस। ओ बी अवे फ्रॉम वायलेंस, यस। शमल मैडम सिंह, रिस्पॉन्सिबल, शमल बगल जी, रिस्पॉन्सिबल सिंसियरिटी। ओके, कामले मैडम का एक मिस हो गया मेरा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक कुछ पुटअप किया था व्हाइल आई वाज टॉकिंग टू यू एंड इट Sir, गॉट it is each individual is important and to be valued. मैं भी चैट में देखता हूँ, चैट में होगा। ओके ओके, आई कैन सी ऑन द चैट। ईच इंडिविजुअल इज इम्पोर्टेंट टू बी वैल्यू, बहुत बड़ी बात है। और अभी यहाँ पे ना फोकस, आई विल पिक अप फ्रॉम कामले मैडम्स मैसेज। ये बहुत सारे जो ट्रेनिंग होता है, वर्कशॉप्स होता है, मैं खुद भी अटेंड करता हूँ, आप भी अटेंड करते हैं, एफडीपी अटेंड करते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, इंस्टीट्यूट में अटेंड करते हैं, इंस्टीट्यूट के बाहर अटेंड करते हैं। आपको पता है कि सारी चीजों का फोकस
यू है कि वर्ल्ड है? मैं आपको मैसेज करता हूँ, वुड बी इजियर. इट इज यू और वर्ल्ड. आप मुझे ये बताइए, ये सारी चीजों का ये जो पूरा एफर्ट है, ये किस पे है ज्यादा? प्लीज टेल. बोथ. ओके. सम मोर. यू. मोनाली जी. ओके. सम मोर. वर्ल्ड. ओके. सम मोर. Some more. Good. Okay, I will just highlight on this. I'm slightly grateful to attend n number of trainings, और वो भी कैसा paid trainings or outside institute, because I'm highly passionate about it. I will share. Everything is majorly on you. Everything is majorly on you. अरे आप ठीक होगे तो आप जैसा वर्ल्ड को देखोगे वैसा वर्ल्ड दिखेगा, या आप जैसा रिएक्ट करोगे वैसा वर्ल्ड रिएक्ट करेगा. तो वो बोलते हैं ना विद इन और आउटसाइड. तो मेन शो इज विद इन, आउटसाइड बाद में आता है. मेन शो इज विद इन यू. यू. अभी आई ट्राई टू गिव एन एग्जांपल. जैसा आपने एग देखा होगा, एग, वो जो कोमड़ी का बच्चा रहता है, चिकन चिक्स जो निकलते हैं, तो वो बच्चा जो अपना खुद से तोड़ के बाहर निकलता है, उसको बाहर का कितना भी प्रेशर डालेंगे तो अंडा बचेगा नहीं, अंडा खत्म हो जाएगा. तो उसका अंदर की ताकत से वो जीवित रहता है, उसकी अंदर की ताकत से वो तोड़ता है वो एग शेल को, और वो जीवित रहता है. कोई हम बहुत बड़ा पत्थर लेके आए, स्टोन लेके आए, वो अंडे को मारेंगे तो अंडा का जान खत्म हो जाएगी. तो कोई भी चीज होती है वो अंदर की ताकत से बाहर निकलती है. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. ये रूट्स रहते ना, झाड़ रहते, बड़े बड़े झाड़ रहते, ट्रीज रहते. तो बाहर लोगों को, वर्ल्ड को क्या दिखता है, ये झाड़ कितना अच्छा है, और इसमें फल है, फ्रूट है, पत्तियां हैं, कितना अच्छा है. लेकिन उसकी रूट्स जितनी स्ट्रांग है तो झाड़ उतना अच्छा है. रूट्स किसी को नहीं दिखती. तो हमारा जो अंदर है ना, आई विल गिव यू वन एग्जांपल. आई वाज टॉकिंग टू माय स्टूडेंट सम 2 days बैक. मैं बोला कि एक आदमी XYZ है, उसको ये डिग्रीज है, ये क्वालिफिकेशन है, उसको ये नॉलेज है, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी. मैं बोला हम पोस्टर लगा के तो नहीं घूमते ना फेस के ऊपर कि हम ये है और हमारे पास ये है, ब्ला 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 सारी चीजें. वो तो अंदर जैसा है वो रिफ्लेक्ट करता है तो वर्ल्ड दिखता है. तो आपको सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी है, सबसे ज्यादा जो एफर्ट पुटअप करना है, वो अपने लिए पुटअप करना है, यू के लिए. तो फॉर अ टीचर, फॉर अ पेरेंट, यू इज मोर इंपॉर्टेंट. आप जैसा बनेंगे तो दुनिया वैसी बनेगी. देखो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, बहुत सारे एनजीओज है, सेंटर्स है, वर्ल्ड क्लास सेंटर्स रहते हैं, बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. क्यों? क्योंकि वहां पे वो लोग वर्ल्ड क्लास रहते हैं. तो जब आदमी वर्ल्ड क्लास बनेगा, अच्छा बनेगा, तो उसका जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड है, वो अच्छा बन जाएगा. तो हमको जो शुरू जो चीज होती है ना, एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा. हम इंडिया में आते हैं और एयरपोर्ट से निकलते हैं, तो हमारे लेज वगैरह खाते हैं, कुछ भी कचरा रहता है ना, तो विंड स्क्रीन के बाहर भेज फेंकते हैं. बहुत सारे लोग, सब नहीं, विंड स्क्रीन के बाहर वो कचरा फेंकते हैं. आप सिंगापुर में हो, आप दुबई में हो, आप लंदन में हो, आप कचरा बाहर नहीं फेंकोगे, आप उसको उसकी जगह पे जाके फेंकोगे, या आप प्लास्टिक बैग लोगे, उसमें रख के फेंकोगे. तो यहाँ पे आदमी क्यों बाहर फेंकता है? तो आदमी तो वही है. तो वर्ल्ड क्या कर रहा है? वर्ल्ड लिख रहा है कि डू नॉट लिटर, डोंट स्पिट, डोंट थ्रो. तो वर्ल्ड तो आपको सिग्नल दे रहा है कि ये चीजें मत करो. गड़बड़ी कौन कर रहा है? वो खुद आदमी कर रहा है. तो वो ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. So considering that aspect, I suggest we should spend more time on grooming ourselves, learning ourselves. जैसा एक आदमी है, हम देखते हैं कि अच्छे कपड़े पहनता है, डिजाइनर क्लोथ्स पहनता है, मार्केट में जाके अच्छे कपड़े लेके आता है. फिर बहुत से लोग जिम जाते हैं, हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने सेहत, अपना हेल्थ का, स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं. लेकिन ह्यूमन वैल्यूज, राइट एक्शन, एथिक्स, इसकी ग्रूमिंग, इसकी लर्निंग भी जरूरी है. हम इस पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं. आई एम तो वेरी थैंकफुल टू योर इंस्टीट्यूट. यू नो, जिन्होंने, वो जो लीडर्स है आपके, जो मैनेजमेंट है, उन्होंने सोचा कि इस तरह का FDPs का सीरीज करेंगे. बहुत ज्यादा तो हम नहीं कर सकेंगे, एटलीस्ट हम कुछ तो हमारे अंदर और हमारे बच्चों में लाने की कोशिश करेंगे. क्या होता है, चर्चा होती तो वो चीज डिस्कशन में आती है, जो डिस्कशन होती है चीज चर्चा में आती है तो एक्शन में आती है. जो चीज की चर्चा ही नहीं तो काम कैसा होगा? तो इट्स गुड पार्ट इज दैट we should groom ourselves, we should learn, and we should get knowledge out of it. Yeah. Next slide, please.
So basically the forward path जैसा क्या होता है, कोई स्लाइड के पहले ही मेरा डिस्कशन खत्म हो जाता है, बट स्टिल आई विल जस्ट हाईलाइट ऑन दिस स्लाइड. तो फॉरवर्ड पाथ एथिक्स को लेके हमको ये करना है कि विद इन पे फोकस करना है. विद इन इज व्हाट एग्जैक्टली, इज इट यू और वर्ल्ड? कैन एनीबडी मैसेज विद इन क्या है यहाँ पे? विद इन का मतलब, so I will understand that we are getting connected. Within is outside, within is world और you, जो हम you और world का डिस्कशन कर रहे हैं. Can you please, anybody please message you? Okay, you. So within is you. Okay, thank you very much. Wow, wonderful. So with the level and with the speed of the messages, I am very grateful that we are connected, on this episode. So सबसे पहला स्टेप है you. सबसे पहला स्टेप है विद इन. अंदर से आदमी बनेगा तो बाहर रिफ्लेक्ट होएगा. सेकेंड पार्ट क्या है? आप अंदर से बने हुए होगे तो बाहर आप रिफ्लेक्ट करोगे. अंदर आदमी गड़बड़ी है तो बाहर गड़बड़ी. अभी एक लैंग्वेज को लो. एक आदमी लैंग्वेज के हिसाब से कभी आप देखो, जैसा वो अंदर है वैसी लैंग्वेज उसकी निकलेगी. जैसा उसको थॉट है वैसे ही थॉट निकलेगा. टोल नाके के ऊपर जैसा मेरा वैल्यू बना हुआ है मैं वैसे ही करूंगा. नहीं तो क्या होएगा, अरे बोले गाड़ी रन करो, हमने 35 रुपया बचा दिया, लेकिन मुझको नहीं रहेगा, नहीं मुझको टैक्स देना है, मुझको ये चोरी नहीं करनी है, मुझको गड़बड़ी नहीं करना है. तो जैसा मेरा अंदर रहेगा वैसा रिफ्लेक्ट होएगा. तो ये दो पार्ट के बाद ये रिसीव जो है, रिसीव अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा. आई विल सजेस्ट एनी ऑफ द मेंबर्स टू प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस रिसीव. यू हमारे समझ में आ गया, रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, जैसे हम है वैसा बाहर निकलेगा. तो ये रिसीव क्या है? कैन एनीबडी प्लीज एक्सप्लेन द थर्ड पार्ट रिसीव? अभी क्या आप लोग फैकल्टीज है तो आई शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम एवरीवन द वर्ल्ड. रिसीव, यस. I wish anybody can unmute and tell us what do you mean by the term receive. Suggest you can unmute. One can unmute and tell us what is this receive. What you accept. Okay. Can anybody please unmute and tell us what is this receive? राम पाटिल जी है, राम पाटिल सर है. सीमा मैडम बोलना चाहेंगी? सीमा मैडम बोलना चाहेंगी? ओके, मीनाक्षी मैडम बोलिए, बताइए मैडम, व्हाट इज रिसीव? Certain moral values we may have within ourselves, and certain values which we don't have, we can receive from the world. थर्ड पार्ट का क्या हमको बताना Which चाहेंगे? थर्ड पार्ट रिसीव का. receive from the world. We have to learn from the world certain moral values which we don't have within ourselves. We can Okay. receive it from the world. Okay. Oh. Okay. As you I will said, slightly differ on this. our country is not that clean compared to others, so we can learn something or we can receive that cleanliness from the other countries. Correct. See, here receive, what we are highlighting is within is you. आप जैसे हो वैसा आप रिफ्लेक्ट करोगे, और रिसीव जैसा आप रिफ्लेक्ट करोगे, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन. रिएक्शन आपको जो आएगा, आप में जेनरसिटी है, आप में काइंडनेस है तो आपको जेनरसिटी काइंडनेस ही मिलेगी. आप में स्वच्छता है तो आपको स्वच्छता ही मिलेगी, जो आपने हाईलाइट किया. तो आप जैसे हो आपको वैसी चीज दुनिया से मिलेगी, ये विश्व से मिलेगी, वर्ल्ड से मिलेगी. एनीबडी विश टू स्टिल पुट अप एनी ऑफ द ओपिनियन विद रिगार्ड्स टू रिसीव? रिसीव का क्या मतलब? हम लॉ ऑफ यूनिवर्स. या वेरी गुड ईशा मैडम, लॉ ऑफ यूनिवर्स. एनीबडी विश टू अनम्यूट एंड टेल अस? सीमा मैडम, राम पाटिल सर, संदीप जी, चेतन पगारे जी, दिनेश सर, शुभागी मैडम, कालेकर मैडम, एनीवन? Isha madam can also, she has share a wonderful message, law of universe. Isha madam, can you unmute and share with us, please? I request Isha Shah madam to please unmute and share with us. Yeah, madam. What do you mean by law of universe? Yes, sir. Good evening, everyone. Good. Yeah. I would just like to say that whatever we give to the universe, that is a law, it comes back to us. Yes. If we are good with others, definitely people will respect us. So, however you are, it reflects and then it comes back to you only. So that is what I mean. You follow secrets, the secrets, madam? I have read it. So you are having a book, or you are having an audio e-book, or what exactly? Hard copy. Acha, you are having hard copy. So I suggest, it's purely a matter of interest to everyone. You can run through the secret
the law of universe, because law of universe is a right fit here. कभी मैडम ईशा मैडम आप यहाँ देखे ना, इसमें within है, within means you, आप जैसे हो वैसा आप उसको पोर्ट्रे करोगे समाज में या दुनिया में, Right. you reflect ना, it will reflect from your side, और जैसा आप Right. रिफ्लेक्ट करोगे वैसे ही आपको मिलेगा. Do you agree on this मैम, this theory? Do you agree on this theory? मैडम आप काइंड रहेंगे Yeah. तो आपको काइंडनेस मिलेगी ना. हाँ मैडम, It ideally काइंड it रहे. should be. हाँ हाँ. अच्छा मैं एक एग्जांपल दूं, थोड़ा सा वियर्ड एग्जांपल है टू ऑल ऑफ यू. If you check it out, I am talking to all the participants. I'm using the word Isha madam. I'm using the word Sharat sir. I'm using the word Minakshi madam. एक तो you know how you communicate. So the other way around, you will get the same respect. If I try to treat the participant as student, then it will be wrong. तो जैसा आप लोगों को ट्रीट करोगे, जैसा जेनरॉसिटी रहेगी, जैसा काइंडनेस रहेगा, वही चीज आपको मिलेगी. तो ये मुझको गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट. आई बिलीव मिस्टर मलक हैज आल्सो पुट अप कि व्हाटएवर यू गिव यू गेट इन रिटर्न. या प्रदीप जी, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, ये हमारा बहुत पुराना बरसों पुराना लाइनर है, एंड इट इज ट्रू. आप जो दोगे वो मिलेगा, आप जैसा दोगे वैसा मिलेगा. और बहुत से लोग तो कहते हैं, आई डोंट नो, कि जैसा लोग कहते हैं कि मरने के बाद जो है स्वर्ग भी है और नर्क भी है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि मरने से पहले मिलेगा. तो ऐसा भी है कि जो आप जैसा दोगे वैसा, गिव एंड टेक पॉलिसी. यस नीलकंठ जी, जैसा दोगे वैसे ही मिलेगा आपको, पूरा पूरा मिलेगा, थोड़ा भी नहीं. गुड, आई एम टोटली एग्री. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. We'll do a very small exercise. I believe you will be having a pen or paper. If you're not having a pen or paper, no problem. But this is an exercise what I'm having. See, this sessions, I believe I could be slightly different. I don't know. But this is more an interaction. आपके साथ मेरा ज़्यादा discussion है. ये एक monologue या one way communication नहीं है कि 1-1.5 घंटा एक faculty आए और आपसे बात करे चले जाए. तो आपसे discussion का majorly session है, इसके लिए सारी चीजें. तो learning activity में next slide please. Next slide please. So I wish you to write it down. I will give 2 minutes to write it down, or you can think at your end. 10 wrongdoings in human being, non-ethical things. Thus, non-ethical things आप जरा सोचिए, 2-3 मिनट you can take it. And somebody can also write on the message. जरूरी नहीं 10, 3, 4, 5 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 7 भी लिखेंगे तो चलेगा. You can also write on the message. 10 wrongdoings in human being. कौन सी 10 wrongdoings आप इंसानों में देखते हो? उसमें 3-4 भी आप लिख सकते हैं, मैसेज पे भी लिख सकते हो, अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं. तो आई विल स्पेंड सम 2 minutes ऑन दिस स्लाइड. Cheating. Okay. You can message me. Okay. Dominating. Okay. At times dominating is good, but ठीक है. More on the negative side. Telling lies. Yes. Telling lies. Okay. Money over values. Yes. Is breaking traffic rule is ethical or non-ethical? Anyone? Breaking traffic rules is ethical, non-ethical? Non-ethical. Wrong ethical. No, breaking traffic rule is good or bad? Breaking traffic rules? Non-ethical, sir. It's non-ethical. Very good, madam. It's non-ethical. It's bad. Non-ethical. And have you come across bullying? आपके यहाँ पे तो नहीं होता होगा, but I see bullying जो होता है, is it good or bad in the colleges or in the schools? Bullying students? Bullying students? Not good. Okay. Arvind Mahajan ji saying. Okay. Greediness is bad. Okay. अभी हमने एक एक्सरसाइज किया, डिसरिस्पेक्ट, सुसाइड, चीटिंग, इमोरलिटी. मीनाक्षी मैडम. ओके. ओके. हमने जो 10 रॉन्ग डूइंग्स देखा है, इसमें इज इट पॉसिबल यू कैन हाईलाइट 1 or 2 थिंग्स विच इज देयर इन द यूथ? अभी हमने एक इंसान के बारे में बात किया, मनुष्य के बारे में बात किया, जिसमें अडल्ट आ गए, टीचर्स आ गए, पेरेंट्स आ गए, बच्चे आ गए, सब कोई आ गया. अब खाली यूथ के रिलेटेड 1 or 2 non-ethical thing you wish to highlight? 1 or 2
one or two non-ethical things in youth you wish to stop, specifically the youth what we are seeing in our colleges, two wrongdoings or two non-ethical things. Can you highlight two non-ethical things? Lying your parents. चीटिंग करते हैं बच्चे अभी, मुझे पता नहीं है एट द डिप्लोमा लेवल, एट द जूनियर लेवल एग्जाम्स में बच्चे चीटिंग करते हैं. Cheating is happening. Okay. Okay. So cheating, yes. Cheating karte bache. Oh, good. It's great to interact with all of you. It's okay. So it's non-ethical. Copying. Okay. Cheating and copying is one and the same. Great. Okay. What else? Not on time. They don't come on time. So punctuality. Punctuality is a big issue. मतलब वो हमने क्लास स्टार्ट कर दी है, वो महाराज की तरह एक आधे घंटे के बाद और 50 मिनट्स के बाद वो स्टूडेंट आ रहे हैं. और अभी तो एक बहुत मजे का बात हो गया. माय लेक्चर इज एट 8:30 इन द मॉर्निंग एंड वन स्टूडेंट केम इन और मैंने उनको बोला था इफ यू आर 10 मिनट्स लेट यू कैन नॉट कम इन. तो मुझको बोलते सर वो एक्टिवा खराब हो गया, टायर पंक्चर हो गया. तो ऑल नॉनसेंस रीजंस दे गिव. आपको भी ऐसे कोई नॉनसेंस रीजंस आते हैं बच्चों के? आपको भी कोई नॉनसेंस रीजन आते हैं लेट होने के बच्चों के? बच्चे लेट होते हैं तो ऐसे कोई इलॉजिकल रीजंस देते हैं बच्चे? हाँ मैडम, मीनाक्षी मैडम. लेट लोकल हो बच्चे गई, अरे भाई जल्दी उठ के आओ, लेट क्लियरली से, लोकल हो गई तो. हाँ मैं जल्दी नहीं उठ पाया इसलिए मैं नहीं आ पाया, मैं रात को लेट हो गया. ऑल दिस जल्दी नहीं उठ पाया, दिस कांट बी द रीजन ना. रात में लेट सोया तो हम क्या करें? व्हाट वी कैन डू? हाँ मैं होमवर्क कर रहा था, तो आपने मुझे देखिए वो होमवर्क दिया था, तो आई हैव टू कंप्लीट माय होमवर्क. तो मैं कैसे होता है इसलिए मुझे लेट हो गया. आई जस्ट वो जो करते हैं वो हम पे अच्छा मेहरबानी करते हैं, वैसे दर्शाते हैं आज का जो जनरेशन है. मेहरबानी करते हैं मैडम. और उनकी स्टोरीज सुन के इतना मजा आता है ना, इतना स्टोरीज बनाते हैं ना वो लोग कि लाइक यू नो, और जेन्युइन की रहती है. गुड. नॉट सीरियस टू स्पेशली इन अच्छा इंजीनियरिंग जब वो सबमिशन होता है, लिटरली वी हैव टू रन बिहाइंड देम फॉर सबमिशन. दे दो भाई दे दो, जैसे उनको नहीं, हमें ही शिक्षक की ज्यादा जरूरत है. वी हैव टू कॉल देम दिस में सच में एक्सपीरियंस इन दिस. तो होमवर्क के लिए तो लिटरली वी हैव टू गो बिहाइंड, सबमिशन करेक्ट. करो सबमिशन करो सबमिशन करो. जैसा मैडम तो जैसा दे नॉट अपने ऊपर टेकिंग कुछ एहसान सीरियसली. करे ना मैडम वो लोग. हाँ यस डेफिनेटली ऐसा हाँ ही है, जैसे कि डोंट यू वो थिंक सो? हम डोंट ऊपर यू थिंक प्रेशर डाल रहे जैसे हैं, वो उनको ऑब्लिगेशन पेन है से हमारे इंटरेस्ट ऊपर नहीं. ऐसा कुछ? हाँ यस करेक्ट राइट. करेक्ट 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 करेक्ट. तो ये जनरेशन थोड़ा कोविड के बाद इसके थोड़ा ऊपर चेंज किसी भी का हो कुछ, गया है. अरे थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा चेंज हो गया मैडम. Okay, anybody is having any opinion on aggression on the youth? I'm seeing a lot of youths are very aggressive. किसी का कुछ opinion aggression को लेके? मेल हाँ, नॉट द गर्ल्स, बॉयज स्पेशली बहुत मुझको एग्रेसिव दिखते हैं. आपका कोई ओपिनियन है एनी ऑफ द एकेडमिशियंस का एग्रेशन को लेके? दे आर वेरी एग्रेसिव नाउडेज. Sir, they एंड have become एग्रेशन इज फुल ऑफ intolerant. They have become अच्छा intolerant to small any matter, like due to the media and due to the news and everything they go on daily basis. So whenever anybody is saying anything to anyone, they just start fighting, giving back the answer and all. So this is their way of अच्छा डरते aggression. हैं मैडम. दे आर नॉट स्कैर्ड ना? दे आर नॉट स्कैर्ड आल्सो? No, they are दे आर not नॉट स्कैर्ड? scared of anybody, not even teachers. Like हाँ हाँ. और क्या होता है मतलब इन अ वे दे लैंड अप, मतलब या उनका पढ़ाई छूट जाता है या जो भी होता है. बट आई एम फाइंडिंग इट वेरी एग्रेसिव. बट yes, यू right, नो sir. वी इनका ये जैसा किसी ने अभी बीच में डोमिनेशन पुटअप किया था. सो डोमिनेशन है, एग्रेसिवनेस है, ये थोड़ा सा नेगेटिव. लेकिन हम यही चीज को है ना उनको ट्वीट करके उनको एथिकल चीज पे लेके जा सकते हैं. सोली डिपेंड ऑन द फैकल्टीज एंड द फैसिलिटेटर हाउ दे कैन डू इट. So next slide, please. We had spoken about wrong things happening in the student. Next, how to stop it? अभी ये जो इतना ये लोग गड़बड़ी कर रहा है स्टूडेंट्स, मतलब any of yeah they are using their full energy. How to stop it? I will share my three. I don't know it's there on the slide. I will type it down, and you can also share yours via the message or this thing. So my one is I wish to reward them. My second is it could be punishment. And third is to replace them with the alternatives.
कि ठीक है आप ये करो, लेकिन ऐसा नहीं ऐसा करो। नॉर्मली अल्टरनेटिव का इट्स नॉट अ करेक्ट एग्जांपल, बट आई गिव समबडी स्मोकिंग, तो वो एकदम से स्मोकिंग नहीं छोड़ेगा, वो ई सिगरेट आ जाएगा या कोई भी दूसरी चीज पे आ जाएगा, एकदम से स्मोकिंग पे नहीं आएगा। तो स्लोली अल्टरनेटिव उसको बाहर निकाल देने का। तो एनी सजेशन? ओके, काउंसलिंग, सोनानी मैडम इज सजेस्टिंग काउंसलिंग, हाउ टू स्टॉप इट। सो आई हैव पुट अप माय 3 रीजन। व्हाट इज द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट? एनी आइडिया? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम कुछ कर सकते हैं? आपके पास कोई सजेशन है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को लेके? एनीथिंग विद रिगार्ड्स टू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट? Anybody is having an idea about positive reinforcement? Increase sports. Okay, good. Thank you, Seema madam. I totally agree with you कि थोड़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ाना चाहिए अपने को। गुड। और क्या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं उनको थोड़ा सही करने के लिए बच्चों को? What else we can do? What else we can do? Verbal encouragement for doing submission on time. Verbal encouragement. Counseling. Keep them busy and engaged. Keep them busy and engaged. Let's कालेकर use of मैडम एक social media. एग्जांपल। Yes, Use sir. of social सॉरी media. मैडम, सोशल मीडिया। कालेकर मैडम एक एग्जांपल Yes, दिया sir. ना तुम्ही एंगेजमेंटच्या? Sir, like एंगेजमेंटच्या during, एग्जांपल दिया। I want to give an example. Like during our lecture, students are making so much noise when we are delivering a lecture. So most of the time, what we do, आई we एम हाईली first, डिस्टर्ब। आई एम हाईली डिस्टर्ब विद दिस। मैडम ये जो छोटी क्लासेस रहती है ना, आई एम हाँ. हाईली डिस्टर्ब विद दिस नॉइजेस। सो हाउ यू हैंडल So इट? what I do means I ask them questions so that they will pay attention whatever we are teaching. And once it is done, discussion is over. I ask them to write it down. So they take at least 5 minutes to write down whatever the topic is discussed. So that way we can increase their engagement towards our lecture. करेक्ट करेक्ट। अच्छा, टीचिंग भी एक है ना बहुत बड़ा इशू हो गया है मैडम, आज का डेट में है ना कालेकर मैडम। Yes, टीचिंग sir. पर से इफ यू सी, तो कोई फैकल्टी है, मैं जेनरिक स्टेटमेंट है, दिस इज जेनरिक, नॉट रिलेटेड टू एनीवन, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। आई एम सीइंग कोई एक वन वे कम्युनिकेशन होता है या एक मोनोलॉग होता है, वो फैकल्टी आते हैं आधे घंटे तक वही बात करते हैं। तो आई वाज इन, आई हैव सीन इट इज प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग 360 डिग्री है ना फीडबैक लेते हैं, मतलब फैकल्टी का फीडबैक लेते हैं, मैनेजमेंट का फीडबैक लेते हैं, स्टूडेंट्स का फीडबैक लेते हैं, दे रेट। और वो जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है ना कॉलेज का, वो फैकल्टी को ईमेल लिख के बताता है कि आपका ये रेटिंग हुआ है। तो द फैकल्टी आल्सो कम टू नो के बॉस वेयर आई एम स्टैंडिंग। तो कंसीडरिंग Yes, दिस, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं लेक्चर्स के बाद भी इंटरेक्ट करता हूँ, तो बहुत सी जगह पे उन्होंने मुझको बोला है कि एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए। तो ये जो आपका एंगेजमेंट आप जो बोल रहे हो ना मैडम, correct, एक्टिविटी sir. बेस्ड ट्रेनिंग, so how many people agree on this activity based training or simulation techniques used for teaching so that we can engage them? How many people, please give me your poll or give me your suggestion. Anybody in this is doing it at your or trying at end? Any of the faculties are trying this simulation technique or activity based techniques in teaching? Please tell me. More hands on practical, peer learning, group discussion. Anybody is doing it at your end? I mean, आप आपका स्ट्रेटेजी मत बताओ, लेकिन मुझे बोलो कि आई एम डूइंग इन क्लास और वी आर डूइंग इन क्लास, आप ऐसा बताओ। ओके, कलेकर मैडम इज डूइंग एक्टिविटी बेस्ड, ओके, ईशा मैडम इज आल्सो डूइंग, आई एम वेरी हैप्पी एंड दिस इज द वे। यस दिनेश सर, आपका क्या बोलना है? Crossword puzzle activity. यस दिनेश सर। I am conducting crossword puzzle activity and jigsaw puzzle so that they can uh, take interest. अच्छा दिनेश सर, गेमिफिकेशन कर सकते हैं क्या? व्हाट इज योर टेक ऑन गेमिफिकेशन, गेम्स के वाया जो टीचिंग है? Sir, actually, if there is some technical terms, then I will prepare the crossword puzzle and the अरे वाह, student will. वेरी गुड। And second, if there is any figure in which there is a construction is there, so I will divide, I will take the printout that puzzle and create the jigsaw so that they can join the jigsaw in a group and they can understand the construction of that particular mechanism or machine. साई जस्ट टू इंटरप्ट यू, अमीन आपने बात किया बहुत खुशी हुई सर। सर आप कितने साल से टीचिंग में हो दिनेश सर?
25 years, sir. How many years of 25. teaching? हाँ हाँ सर, आपका आवाज से और आपका क्वालिटी डिस्कशन से, सो आई तो पुट अप अ नमन टू यू सर, कि मुझे बहुत खुशी होता है कि कोई टीचर, कोई लेक्चरर एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करता है सर। वी आर वेरी हैप्पी एंड सो काइंड ऑफ यू सर शेयरिंग। और एक अच्छा बात सर आप में ये है कि है बहुत एडवांस लेवल है, जो पजल है ना, इसके लिए दिमाग चाहिए। मतलब एवरीबॉडी कैन नॉट वर्क ऑन द पजल एंड फाइंड द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ इट। Yeah, sir. Actually, preparing crossword puzzle, it will require number of hours and it is very difficult. Yes, sir. सर Thank you, नंबर sir. ऑफ सर, थोड़ा दिमाग भी चाहिए ना सर, दिमाग भी चाहिए ना, मतलब इन अ वे। Yes. So high Thank you, level of sir. intelligence required. Highly grateful, sir. Yeah, Arvind Mahajan ji. Yes, sir. Mahajan sir, you can share yes your sir, viewpoint. thank you Mahajan sir. very much for giving chance opportunity me. Actually sir, मैं एक एक्टिविटी करता हूँ every year for the first year students at government polytechnic Thane. For Okay. this is a paper activity. The purpose of activity is Okay. to teach them the learning attitude. Okay. तो मैं एक ऐसा काम करता हूँ, Okay. सबको सेम टाइप का एक पेपर देता हूँ और उनको आंखें बंद करके कट Okay. करने को बोलता हूँ सर उस पीस को। क्लोज योर आईज एंड कट वन कॉर्नर। मतलब कौन सा कॉर्नर कट करना है ये मैं Okay. उनको बताता नहीं। तो जब कट करके हो जाता है ना Okay. कि फोल्ड करते वापस कट करते, तो उसके जो शेप्स आते हैं सबके अलग अलग आते हैं। फिर मैं उनको पूछता हूँ कि भाई Oh, आपके सबके okay. शेप क्यों अलग अलग है, सेम इंस्ट्रक्शन दी फिर भी शेप्स क्यों अलग आए। तो वैसे लर्निंग है, जब आप Okay. सीखते हो Okay. टीचर पढ़ाता है तो सबके मार्क्स इक्वल नहीं आते। तो उनको मैं Correct. लर्निंग Correct. एटीट्यूड डेवलप करने के लिए ऐसी दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी में अलग अलग ऐसे एक्टिविटी करता हूँ सर। करेक्ट सर, ये आपका जो मार्क्स का है, मैं आपसे एक चीज और पूछने का एक वो प्रिविलेज लेना चाहूंगा। डू यू बिलीव इन यस सर। ग्रेडिंग सिस्टम इन एजुकेशन और नॉट? आप ग्रेडिंग को सपोर्ट करते हो कि आप सपोर्ट नहीं करते हो सर ग्रेडिंग सिस्टम को? ये जो बहुत इट्स सारे मार्क्स लाना बच्चों को, ये आपका क्या, आपका क्या ओपिनियन है ग्रेडिंग सर ग्रेडिंग सिस्टम को में लेके? मैं देखो सर, आप ग्रेडिंग में भी कैटेगराइज करते हो तो भी वो भी मार्क्स पे ही आता है, इनके मार्क्स के बेस पे ही ग्रेड आते हैं। लेकिन मैं मार्क्स पे ज्यादा हाँ बिलीव मतलब नहीं करता, मार्क्स एंड बिलीव ग्रेडिंग करता माने हूँ मतलब कि मार्क्स और ग्रेडिंग दोनों पे मैं बिलीव नहीं करता एज अ लेक्चरर, पर्सनल ओपिनियन इट्स माय। हाँ लेकिन सर ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट में क्वालिटी हो। जनरली आजकल के जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास जनरल नॉलेज बिल्कुल नहीं होता है। वो लोग मोबाइल में पढ़े, जनरली फील्ड का जो जनरल नॉलेज है उनके पास जीके जीरो होता है। अगर मैं उनको पूछता हूँ कि एक 4-5 न्यूज़पेपर के नाम बताओ, तो लोग बता नहीं, स्टूडेंट बता नहीं पाते, उतना भी वो बता नहीं पाते। कभी कभी कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं। तो उनमें यानी कि जो इंटरव्यू के सर लिए अब जो टेक्निकल स्किल है, कम्युनिकेशन है, वो ज्यादा होना चाहिए। करेक्ट, तो एटीट्यूड का भी प्रॉब्लम होता है सर स्टूडेंट्स में थोड़ा, यस सर। महाजन सर? एटीट्यूड, एटीट्यूड का यस सर, प्रॉब्लम, एटीट्यूड का भी बहुत एक तो इश्यू है सर नॉल बच्चों में। अच्छा, एक तो नॉलेज है नहीं और एटीट्यूड बहुत सारा है ना सर? हाँ, उनको लगता है कि मुझे बहुत कुछ पता है और एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द गूगल। हाँ गूगल ही उनके लिए गुरु है, हाँ, टीचर उनके लिए गुरु नहीं है। बहुत नहीं सारे नहीं, स्टूडेंट का ये एटीट्यूड होता है कि एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द गूगल। हाँ, good good, thank you very much sir. I'm highly delighted to interact with all of you. It's also learning for थैंक यू myself सर। as a teacher, and जो हम ऑब्जर्व करते हैं आप लोग भी वही ऑब्जर्व करते हो, एंड दिस इज द वे इट गोस। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच मैम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कालेकर मैडम, केस स्टडी, या नेक्स्ट। Okay, we'll take this case and we'll skip one case. I believe we'll skip this case. We'll jump to the next one. We'll skip this case. Yeah, we'll skip this case. Professional ethics में here I just wish to highlight, so spend some 5 minutes onto it कि एक हम ethics की बात कर रहे हो और एक professional ethics भी होता है। तो before I get into it, anybody is having an idea about this professional ethics? Anybody is having an idea about professional ethics? Ethics तो हमको पता है बहुत सारा. What is this professional ethics? Okay, is it related to corporate or companies or organization? Please tell me a yes or a no, at least via the message. Is it related to corporate, companies, organization, institutes? Okay, Meenakshi madam is saying yes. Okay, so it is related to ethics. So एक तो ethics जो हम हमारे अंदर खुद होनी चाहिए, एक बच्चों में होनी चाहिए, और एक होती कंपनीज के अंदर. So let me highlight on that aspect also. So 5-10 minutes I will spend on to it very quickly. Yes, ma'am. Next slide. Next slide, please. What I have done,
I'm giving a very giving full justice to whatever we are doing. Okay, great. Okay, full justice, but Seema madam, this is more related to the organizational ethics. You know, this is more of formal ethics and more on the institutional level. This ethic. What I'm doing is that I don't wish to talk on a generic concept of professional ethics. What I did, I picked up a practical example and sharing with you. So what I have done is that there are so many industries, FMCG hai, banking hai, retail hai, insurance hai. So I picked up real estate as an industry. रियल एस्टेट के अंदर एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम ये, इसकी वेबसाइट भी है rics.org, जो आपके सामने Hello. Sir, you are not audible. Ma'am, am I audible? Yeah. Yes, sir. Now you are audible. Okay. Okay. Okay, so this slide I put up, what I have done, मैं generic वो नहीं बोलना चाहता हूँ एक प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में. तो what I have done, I picked up a industry, real estate is an industry. रियल एस्टेट के अंदर जो है, जो टॉप रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स है पूरे वर्ल्ड में, डेवलपर्स है, बैंकर्स है, वेल्थ मैनेजमेंट में है, इन्वेस्टर्स है, तो हार्डली 1,25,000 पीपल आर ओनली मेंबर्स ऑफ दिस RICS. उनको एमरिक्स बोलते हैं, उनके नाम के आगे एमरिक्स लगता है. तो ये सस्ता है, लंदन में, यूके में इसका सर्टिफिकेशन होता है, बहुत सारे एग्जामिनेशन रहते हैं, केस स्टडीज रहती, ये रहती. तो इनका एक यूनिक पार्ट है जिसके लिए मैंने आपसे शेयर करने का वो प्रिविलेज किया. एक यूनिक पार्ट ये है कि इनके पास हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स है in terms of conduct, in terms of ethic, in terms of integrity. ये बोलते हैं हम कोई भी ट्रांजेक्शन करे, किसी के साथ कोई भी डील करे, इट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट, इट शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर. तो दैट इज द रीजन आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ दिस. और इसी तरह कोड ऑफ एथिक्स जो रहते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अपने कोड ऑफ एथिक्स है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के भी अपने कोड ऑफ एथिक रहते हैं. तो ये RICS का कोड ऑफ एथिक्स है. विल जस्ट वेरी क्विकली रन थ्रू ऑन दिस. आई विल स्पेंड सम 5-7 minutes on to it before we jump on to the second part of this. Yes ma'am, next slide please. इसमें एक ने बहुत अच्छा इनका ये स्टेटमेंट है. दे आर सेइंग डिलीवरिंग कॉन्फिडेंस, कि वी विश टू डिलीवर कॉन्फिडेंस टू द वर्ल्ड. एवरीथिंग वी डू इज डिजाइन टू इफेक्ट पॉजिटिव चेंज इन द बिल्ड एंड नेचुरल एनवायरनमेंट through our respected global standards, leading professional progression and our trusted data insight. We promote and enforce the highest प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इन द डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ लैंड, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर. कहने का मतलब ये है कि इनके पास है ना हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है एथिक्स का, इंटीग्रिटी का. तो ये स्टैंडर्ड्स बना कैसा है, इनके पास एक रूल ऑफ कॉन्डक्ट है, and they are having 5 rule of conduct and every member should follow it. So I will just share those 5 rule of conduct. Next slide please. This is a decision tree, we'll skip. Next slide please. So they are having a 5 rule of conduct. ये written documented इनके पास है rule of conduct. The 5 rule of conduct है with the examples. So I will just share. So these are the 5 rule of conduct. So they are saying that we focus, the members and firm must be honest, act with integrity, comply with their professional obligation, including obligation to this. Must maintain their professional competence पे ये focus करते हैं. ये focus करते हैं good quality diligent service पे. ये focus करते हैं respect and encourage diversity and inclusion. और ये फोकस करते हैं टू एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्शन एंड टू एक्ट, प्रिवेंट हार्म एंड मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस. मतलब बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट पे ये फोकस करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अभी एग्जांपल में बहुत बारीक है. आई एम नॉट हैविंग माय स्पेक्स आल्सो, सो डिफिकल्ट फॉर मी टू रीड. So examples are there. I believe this PPT will share with you. This PPT has been made for this thing. So these examples are there. You can read it at a later stage. Yeah. Next slide.
Yeah, I just hold for 2 minutes. So here, our main focus is what we have to do is that we just have to pick up this 5 rules of conduct और इसके कीवर्ड याद रखना. जैसा हम एकेड्स में देखते हैं, हमारे एकेड्स का काम कैसा होता है, किसी को थीसिस लिखना है, किसी को बुक लिखना है, किसी को रिसर्च पेपर लिखना है, तो पहले कीवर्ड बनाना पड़ता है, कीवर्ड बनाने के बाद एब्स्ट्रैक्ट बनता है, एब्स्ट्रैक्ट के बाद रिसर्च पेपर बनता है, और रिसर्च पेपर के बाद आप बुक लिख सकते हो. सो आई बिलीव इन कीवर्ड्स. कीवर्ड से लर्निंग फास्टर होती है, and I believe you people, all the respected participants are also lecturer and academician, so we focus more on the keywords for a faster understanding of this. So it should be honest, integrity. Honest is the प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस के खुद हम कैपेबल होना चाहिए कोई भी चीज करने के लिए, तो उसका फोकस वो संस्था के फैकल्टीज को और स्टाफ को होना चाहिए. whatever we provide the top quality and the diligent service, and we should respect. अभी हमने देखा, जब हमने पूछा लोगों से, पार्टिसिपेंट से, तो उन्होंने बोला हैप्पीनेस है, पीस है, रिस्पेक्ट है, तो इनके पास भी रिस्पेक्ट एंड एनकरेज डाइवर्सिटी है. और लास्ट इज पब्लिक इंटरेस्ट. पब्लिक इंटरेस्ट ऐसा नहीं कि भाई मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ या पढ़ाता हूँ, आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक इंटरेस्ट. जो आउटसाइड वर्ल्ड है, सोसाइटी है, समाज है, गवर्नमेंट है, I am also, must act in public interest, take responsibility for the action, act to prevent harm and maintain public confidence in the profession. मतलब हमारे वजह से external world disturb नहीं हुए, हम इतने professional रहे. Yeah, next please. Okay, just hold for minutes. So, yeah, इसके पहले का slide. So, ये इस तरह का एक संस्था का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है और कोड ऑफ रूल्स होते हैं. तो हमारे आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे कि हम ये कोड ऑफ कंडक्ट कैसा फोकस करें. इसके पहले एक 2-3 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो 3-4 मिनट्स का विल स्टिक ऑन एथिक्स. मैम, shall I share the link here on what is ethics? Yes sir. मैसेज में मैं करता हूँ. 2-3 मिनट का क्विकली देखते हैं, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है. वी हैव टू रैप अप एवरीथिंग बिफोर 5, सो आई विल रश फास्टर. मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि I was finding I would be having a lesser content, but sorry to say I have to skip some certain content. The only reason is that very good participants, highly intellectual, highly mature, and very quality discussion. So मेरा contents मुझको कम पड़ रहा है. So that kind of a thing. So I really appreciate all of you. This 3-4 minutes ka, this thing is that we'll run. How many decisions do you think you make each day? If you ask the internet, the answer will range from 70 to 35,000. If you ask us, it's the wrong question to be asking at all. That's because we're interested in ethics. We're not concerned about the quantity of your decisions. We care about their quality. You might want to think of ethics as a tool that helps us create the difference between a good decision and a bad one. Ethics is the branch of philosophy that asks the practical question, what should we do? This leads to the study of things like values, principles, beliefs, and norms. These are the things that shape our choices. Ethics asks us, how should we live? What choices should we make? And what makes our lives worth living? It tries to help us define the conditions of a good choice and then figure out which of our available options is the best one. Let's say a close friend, Lee, confides in you that they're struggling with depression. They're feeling isolated and alone. But whenever they're invited to go out, they find it impossible to do. Lee insists they don't want anyone else to know. They're trusting this information to you alone. A few days later, another friend comes to you, frustrated about Lee. Lee's flaked on plans at the last minute yet again, and your friend has had enough. They've decided they just won't bother inviting Lee out anymore. So you're torn. If Lee stops being invited to things, the isolation could make them feel even worse. Sharing information about their depression might help Lee be treated with more empathy and compassion. But it would be a breach of trust. And if Lee found out, especially in a vulnerable state, who knows what might happen? What do you do? Keep the secret and allow Lee to be socially isolated? Or break Lee's trust, but do it for their benefit? Answering this question means getting clear on what matters, our values and principles. Our values are the things we hold to be good and therefore care about most deeply.
Things like justice, knowledge, family and equality. In this case, we're likely to value both trustworthiness and compassion, which pull us in different directions. So it looks like an appeal to values alone won't let us solve this dilemma. We don't just need to know what's good, we need to know what's right. This is where principles come in. They help us draw a line in the sand. They determine the acceptable ways of getting the things that we value. So what's our guiding principle with regard to Lee? Some people might adopt a principle like be true to your word, meaning you keep Lee's confidence no matter the risks. Others might be inclined towards a principle like act in people's best interests and decide that it's in Lee's best interest that people know about the depression. Of course, there are still ambiguities, which is part of what makes ethical decision-making so complicated. So how do we select which values and principles to adopt? And how do we make choices when we face a conflict of values and principles? Good versus good, right versus right. What helps to orient our judgment is a connection to purpose. What's our guiding North Star? What's our reason for being? Think about Lee again. Now, think about the purpose of friendship. What are friends for? Think about why Lee decided to tell you in confidence. Your purpose as Lee's friend is to share their life with them, the highs and the lows. But it's their life and it's their decision on who they share it with. Lee chose to share this information with you alone. Given this, even if you prefer to act in people's best interests, thinking about purpose and thinking about Lee's purpose might encourage you to take a different path. Every time we make a choice, we change the world. What kind of world do you want to live in? Whether you make 35,000 choices a day or just one, what's important is that you make choices that are good and right. Choices you can justify, ones you can be proud of. That's what makes the choices actively yours. Thank you very much, Salika madam. We can run on the next slide, please. Yes, sir. So any take on the video, any understanding or any take on the video from any of the participants? You can message, please, or you can unmute and share. Okay, straight away jump for, no sharing. Okay, no issue. Okay, learning and activity. Next slide, please. I wish anybody, madam, please share. What's your Archana madam? You can unmute. Archana madam, you can unmute. Okay, she wished to share something. Okay, she raised her hand. No problem. What anybody wish to share one incident of ethical issue or good deed? It could be a wrongdoing or a right doing. Any one incident anybody wish to share? Any incident they came across in life about a wrongdoing or a good doing? The way we shared about the auto rickshaw and all this thing. Any more stories, any more suggestions, any more opinion? Anyone? We'll spend some 2 minutes on this. Shubhanki madam, do you have any incident or story to share? Properly in English, Hindi, Marathi, or Gujarati? Anyone, please? No one wish to share? Will, next slide, please. Madam, next slide, please. Okay, so whichever things we come across in life, incident come across, it could be a good deed or a bad deed. What we have to do is that we have to rectify those things in going forward, or there should be
either you rectified the wrong things. If it's the right thing, then you have to find a reason. Next slide, please. So if it's right, you have to find a reason. If it's wrong, you have to see the rectification. So that way we can further repair and establish right point. Yeah. Now I wish to share about code of ethics. I wish to spend some 3-4 minutes on this topic. Yes, just hold this slide. So basically, code of ethic is a set of rules and principles designed to encourage ethical conduct among a group of professionals. So what I could suggest the participants, I believe, in your institutes, you can come up with a committee or member of 3 or 5 at your end, and you can chart out the code of ethics. So for example, you would be having a vision statement, a mission statement, or a core values. So there should be a code of ethics for it. Next slide, please. Next slide. So for example, this Michigan Code of Educational Ethics they are having. So responsibility to the profession, responsibility for professional competence, responsibility towards students, responsibility to the school community, responsibility in ethical use of technology. So before I go ahead with it, is any institute or any of the faculty members are having code of ethics in their institute? Please share your response via the message or unmute and share. Do you have any of ethics in your institute? Yes or no? If it's no, put up no. Do you have a code of ethics at your end? So taking a privilege, yeah, okay, Meenakshi madam. So taking a privilege on this FDP, specifically talking on ethics, I suggest the participants, you can internally discuss in your institute to coming up with a committee for ethics, and you can come up with a code of ethics, at least 3 or at least 5, minimum 5. You should come, or minimum 3 will also do. I'll give you more examples. So this is one example of Michigan Code of Educational Ethics. One more example, please. Next slide, please. So code of ethics could be integrity, teamwork, objectivity, confidentiality, group. So here I suggest participant can share at least 2 code of ethics with us. Anybody can share 2 code of ethics you wish to suggest to your institute. Any 2 code of ethics, 1 or 2 code of ethics, or 1 code of ethics which you want the institute should adopt. हमको सजेशन देना है. अरे सजेशन देने में ऐसा कोई परेशानी नहीं है. You can suggest to the institute. So what kind of a suggestion you wish to put up? Ram Patil sir is there. In code of ethics, what is 1 or 2 code of ethics you wish to suggest for the institute for to be inculcate in the youth? Any suggestion you wish the student should follow or the institute should follow? Any suggestion? We have to wrap up fast. So if you can give me at least 1 or 2 response, I'll move to the next slide. Kalekar madam, can you request anybody to please volunteer 1 or 2 ethics? Pradeep ji, one or 2 ethics you wish to suggest. I mean, itna to aapko idea hoga na, code of ethics you can suggest 1 or 2 ethics. The examples are there on the screen. Integrity, teamwork, objectivity, confidentiality, growth. Integrity and teamwork, sir. सर टीम वर्क आप पुटअप करना चाहोगे? टीमवर्क नीलकंठ सर इंकल, हाँ ओके, इंस्टीट्यूट नीलकंठ सर ये पुटअप करना चाहिए. ओके मैडम, इन योर इंस्टीट्यूट. एनी मोर सजेशन यू विश टू पुट अप? अदर्स? राम पाटिल सर इज देयर, शरद सर इज देयर, ईशा शाह मैडम इज देयर, अरविंद महाजन सर आपको कुछ ऐड करना है? हमारे दिनेश सर भी हो गए, दिनेश लोहार सर या महाजन सर. सर ये जो टीमवर्क सर महाजन सर आपसे एक चीज पूछना है कि हाँ महाजन सर एक चीज ये पूछना है आपसे, कोड ऑफ एथिक्स इंस्टीट्यूट को जो है होना चाहिए क्या नहीं होना, बताइए प्लीज. कोड ऑफ एथिक्स इन द इंस्टीट्यूट होना चाहिए सर, होना चाहिए. इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट और इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूट टीचर्स फैकल्टी. स्टूडेंट नहीं फैकल्टीज नहीं, स्टूडेंट. कोड ऑफ एथिक्स फॉर द स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट. यस सर होने चाहिए. हाँ तो ओके, नीलकंठ सर ने भी बोला होना चाहिए. एनीबडी मोर सजेशन? मीनाक्षी मैडम. तो व्हाट वी कुड सजेस्ट, यू कैन गो बैक टू योर इंस्टीट्यूट और उनको आप बोलिए कि कोड ऑफ एथिक्स जैसा हम विजन स्टेटमेंट रहता है. आई एम फ्रॉम द कॉर्पोरेट, सो वी वर्क ऑन द कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, वी वर्क ऑन विजन स्टेटमेंट, वी वर्क ऑन मिशन स्टेटमेंट. आपके इंस्टीट्यूट्स में भी होता होगा, अश्योरेंसेस होते होंगे, कोर वैल्यूज होता होगा, प्रिंसिपल्स होते होंगे. तो आप कोड ऑफ एथिक्स के लिए भी सजेस्ट कीजिए, और उसमें मिनिमम 3 हो सकता है महाजन सर, या 5 हो सकता
हो सकता है, आप लोग डिसाइड कीजिए। एक पैनल बना लीजिए, एक 3 फैकल्टी का, इसमें से मैनेजमेंट और कोड ऑफ एथिक्स इज द बेस्ट आइडिया। यस, थैंक्स। तो कोड ऑफ एथिक्स होके और उसको है ना आप एक फ्रेम बना के स्टाफ रूम में भी लगाइए, और वो जो कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे, डायरेक्टर होंगे, डीन होंगे, बोलेंगे सर आपके ऑफिस पे भी ये फ्रेम लगाओ कि वी विल ईट ड्रिंक एंड ब्रीथ दिस कोड ऑफ एथिक्स इन इंस्टीट्यूट, क्योंकि जितना इसका चर्चा उतना एक्शन में आएगा, नहीं तो सर ये प्रेजेंट थियरी और बुक्स और डिस्कशन में रहेगा, एक्शन में कुछ आएगा नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या थैंक्स सर, नीलकंठ सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, next slide madam. Case study, we don't have much time, I wish to skip it, I will share this presentation with you. So basically case studies में हमने क्या बात किया है, case studies में qualities पे बात किया, human values पे बात किया। तो मुझको एक खुशी, why I'm skipping that reason is that academicians, people of high intellect, तो जो चीज कम्युनिकेट करना है तो वो ऑलरेडी उनके पास वो है, so I don't wish to waste much of our time in discussing on it. So that is the reason wherein I feel some important points I touch base, I just try to touch it. Any questions or queries before we end this session in next 5 minutes? Any question, query, clarity, discussion you wish to put up? I will wrap up this session in next 5 minutes. अगले 5 मिनट में हम सेशन खत्म कर देंगे। किसी का कोई क्वेरी, सजेशन, ओपिनियन, डिस्कशन, so we will open this session for 2 minutes. Yes, sir. Meenakshi madam, nice session. Thanks. Any opinion for all the participants? Any opinion for all the participants? कोई unmute करके बात कर सकते हैं? They can also unmute their video also. They can unmute their audio. They can unmute their video. Yeah. Yes, I request participant to please share your views, opinion on this session. At least one Sir. feedback. Nilkan sir. Yes, Nilkan sir. Yes, sir. It's a very interactive session, sir. Hello. Any opinion you wish to give, a suggestion you wish to give to all the participants that we should do this thing about the code of ethics, about the ethics part? आपका कोई suggestion है sir इसमें? Yes, yes, definitely it should be implemented in our institutes. हाँ, मतलब खाली ये थियरी और प्रेजेंटेशन में नहीं रहे ना सर, आगे चल के कुछ काम भी हो इस पे। Yes, yes, yes. Yes, definitely. Dinesh Lohar sir is there. Dinesh Lohar sir. Dinesh Lohar sir is there. Anyway, Dinesh Lohar sir is there. Dinesh Lohar sir is there. Yes, sir. या सर आपका ओपिनियन चाहिए, आप एक सीनियर एकेडमिशियन हो और खुशी हुई कि सर आपके साथ ये सेशन में हम थे। सर आपका कोई ओपिनियन है तो ऑल दी अदर पार्टिसिपेंट शुड आल्सो फॉलो। आपका कोई ओपिनियन सर, सजेशन? Yeah, sir. Actually, there are changes in generation, and definitely it is need to inculcate the good habits and ethics among the students, because naturally, if this thing happens at the student life, it will help in their professional life as well as a good human being. Thank you, sir, for your nice presentation. Thank you. Thank you very much to be with you. But I am wrapping up in 5 minutes. There is 2 minutes ka video as of our Guruji. So we wish to share. So I will wrap up very quickly. This video will share of Guruji of Gopal. Can you please share the link? Link, sir. Okay. I will just share the link. I will just share. Yeah, madam, I'll share the link. So it's just a 2 minutes video, not very long video. And I wish to wrap up in next 3-4 minutes. So please be with us. Please don't leave the session. You guys are there for last please hours. continue. Yeah. Yeah, I've already messaged, ma'am. That message in the group. To turn you into a masterpiece. But in People's City, there was a museum. The floor in the museum was laid with marble tiles, and right in the center of the foyer was a huge marble statue as a part of the display. Many people from all over the world visited the museum every day and admired the beautifully crafted statue. One night, one of the marble tiles on the floor started talking to the marble statue. "Hey statue, we are originally from the same town. We were picked up from the same mine, transported on the same lorry, brought to the very same sculptor.
Why then do people from all over the world come all the way here just to step on me while they admire and praise you so much? This is so unfair. The marble statue replied, "My dear friend, Otile, do you remember how both of us sat there side by side in the sculptor's workshop in our original forms as marble blocks? And do you recollect how the sculptor chose to work on you first? He started using his tools on you simply to turn you into a masterpiece. But you resisted. You started falling apart. Of course I remember, said the marble tile. I hate that guy. How could he use those sharp tools on me? It hurt so badly." The marble statue continued, "That's right. When you couldn't take the pain of his tools, he decided to give up on you and start working on me instead. I knew at once that if I had to be something different, I would have to bear the pain. Thinking so, instead of resisting, I bore all the pain of the sharp tools he used on me. My friend, there is a price to everything in life. Since you decided to give up halfway, you cannot blame anybody who steps on you now. Life, as a sculptor, wants to make a masterpiece out of you. The question is whether you're ready to handle every test, every hard knock, every trouble, every failure, all the pain that comes from these sculpting tools and become a masterpiece. Or do you grumble and crumble down to simply become a tile? That is what decides whether people step on you or admire you as you become a role model for someone to emulate. Thank you. Yes, madam. Last two slides, another 2 minutes, then Yes, we'll sir. wrap up. Please be with us. Please don't leave the session. Another 2 minutes. I request all the candidates to please continue with the session. Yeah. So things beyond, we had spoken about the ethics and beyond. So I was just thinking, what could be one strong thing which will try to push us to inculcate this one of the human value of ethics in ourselves, in our students, and in the society. So I got one thing. Can you share the next slide, ma'am? So intention. So this is a very strong word. So if you are having a good intention, then you decide what you have to do. So your intention take you to the right direction and your intention take you to the wrong direction. Next slide, please. So this is one of the wonderful slide in the entire presentation. It talks about actions are dependent upon their intentions. I repeat once again. Actions are dependent upon their intention. For example, आपको कोई एक्ट करना है सही या गलत, वो आपका इंटेंशन डिसाइड करेगा आप सही करोगे कि गलत करोगे. सो इंटेंशन इज द keyword, and that's how. What is this word intention call in Marathi? Anybody, please? I wish to also learn, because we are more prone on the English side. So can somebody teach me what is this word intention call in Marathi? Anybody? नियत जिसको बोलते हैं, इंटेंशन बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं इसको? एनीवन? मीनाक्षी मैडम? हेलो? नीलकंठ सर? What is the Marathi term? Hetu. Okay. Gorke sir is saying Hetu. Is it correct? Hetu is correct in Marathi? Yes, For yes, sir. intention? Yes. Great. So I believe at least one thing very strongly we should carry with us: purpose. Yes. Intention. Intention कैसा नियत है basically, in your mind कि ये मुझको करना है, ये नहीं करना है. So actions are dependent upon their intention. And गोपाल गौर दास जी का जो वीडियो था उसमें मेजरली फोकस था ह्यूमन के ऊपर. को बनना है अपने आप को नहीं बनना है तो योर फ्री वे, योर वे और हाईवे. क्या कहावत है इंग्लिश में? योर वे और हाईवे. तो प्योरली डिपेंड, आपको कुछ करना है तो कुछ कर सकते हो, नहीं करना है तो नो वन इन द वर्ल्ड कांट हेल्प यू. नेक्स्ट स्लाइड मैम. नेक्स्ट स्लाइड. So this is the one of the slide what we have seen at the start of the session. So we got a lot of learning. I don't wish to spend much time on asking you about it. So I believe a lot of keywords you can put up here if you can check. So I apologize for a delay. Class, a master class
to interact with. I mean, you might learn something from you. I had also learned a lot of things. I especially carry the word hetu with me today, while I would be doing a good part or a bad part in purely a good part in life, and to avoid the bad part in life. And a lot of interaction happened. So very much thankful, incredibly grateful, and unbelievably blessed to all of us in the group. Yes, ma'am. Kalikar, ma'am, you can take over. Thank you Yes, very sir. much. I would like to give vote of thanks on behalf of Thakur Polytechnic family. So today's session was on ethics, and today we have so many things to get back with us with this session. And it is not about only about the learnings, but it is now about the acting. Like we have learned, we know what comes under the ethics, but now it is the time that we have to act on it. We have to start believing in student, believing in us, and start acting so that we get the ethics in our students. Sir, one more thing I like about your presentation is it was very much interactive with all of us, involving each and every participant, including me. So it was really a good session for all of us. Uh, we like the way you interacted with all of us. You showed us the videos also. There were some activities, study cases also. So we have learned everything now, but I can say after 1 month that yes, we have started acting on this also. So thank you so much, sir, for your guidance and valuable time for all of us. And thank you all the participants for bearing the technical glitch from our end. I request all the participants to please fill the feedback form also. And thank you once again. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you, everyone.